starting with just a minute. So friends, good morning and welcome to all. And today's CEP session is specially for the topic of the today's CEP session is valuation by using technology, artificial intelligence and data governance in Indian regulatory compliances. And the subject expert and resource person for today's session is none other than our backbone, Dr. Rajvinder Singh, who is CEO of the organization as well as president of the our governing board of Council of Engineers and Valuers. And today's session, a few things about today's session: valuation by using technology, AI, data governance, and in Indian regulatory compliances. Please mute yourself. With the valuation professional rapidly evolving, technology adoption is no longer optional. It is a compliance necessity and competitive advantage. Artificial intelligence, AI, data governance, automation, and digital compliance framework are transforming how valuations are conducted, reviewed, monitored, and enforced across regulated sectors. Why this topic is crucial for today's valuation professionals. India's regulatory system under IBC, Companies Act, SEBI, RBI, FEMA, taxation laws, and more, has seen a major shift in expectations from valuation practitioners. Authorities are increasingly emphasizing. So, accuracy and scientific justification of value conclusions, use of digital tools and verified data sources. These things are increasingly day by day and maybe may not be optional in future. Transparent documentation and secure digital record keeping. Risk assessment linked to real-time market analysis. Ethical compliances while utilizing machine-assisted decision system. So the IBBI recent focus on standardization of digital oversights of valuation reports further highlight the essential role of technology for improved due diligence. That is the first step, improved due diligence. Data-driven valuation modeling, auditability and traceability of professional judgment. What the decision you have taken that has to be audited and traceable also. Reduction of subjectivity and legal disputes. That is the most important point. What this session will cover. Today's CEP session will explore cutting-edge tools, methodologies, and compliance expectations, including integration of AI in valuation model, big data analysis for real estate, securities, and machinery valuations, automated risk analysis, scenario testing, and decision intelligence, cybersecurity, confidentiality, and digital evidence maintenance, legal and ethical boundaries of digital valuation assistance, confirmation of IBBI and global valuation standards, IVS and Indian standards. Experts have demonstrated practical application using industry accepted digital platforms, small data libraries, and valuation tech framework adopted globally. So friends, without wasting much time, I would like to say that valuation professional standards at the intersection of technology, policy reform, and stakeholders accountability. By equipping valuers with the right technology and governance framework, CVIF RVO aims to support a more robust, compliant, and data-driven valuation environment in India. This is not just another learning event. Remember, this is not just another learning event. It is a step towards the future valuation under IBC and beyond. Further details, you can contact on CEV helpline number. And this session, because it is not possible to cover all the things in 4 hours restricted time. This is the first session. If anything remains और कोई क्वेश्चन या आपका कोई डाउट होगा तो हम कोशिश करेंगे इसका एक सप्लीमेंट्री सेशन करेंगे, उसके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. जो भी इसमें कुछ रह जाएगा या कुछ पार्ट रह जाएगा, we will try to cover in the forthcoming session very soon. So without wasting much time, I would like to request Dr. Rajvinder sir to please take the charge. Good morning and welcome to the class, sir. Thank you, Sandeep ji.
and very warm welcome to all the participants. As we have already discussed that we will be dealing with the topic the presentation. So here we will be discussing about the topic valuation by using technology and AI, and especially in case of doing valuation in IBBI and other regulatory authorities valuation. So CEV welcomes you for this presentation, and in this case, we in this session we will be discussing about valuation by using technology, AI, and data governance in Indian regulatory compliances for IBBI registered valuers. So, as already Sandeep have told you, that this is very important topic. Before the advent of AI, all the work of valuation, whether it was land and building valuation, whether it was plant and machinery valuation, or for security valuers, security and finance valuers, all the work was done manually. But with the advent of AI, many things have been added which will make your work more easy, not more easy, it will also make your work risk free. If not risk free, at least it will reduce the risk. So this is a topic: technology, AI, and data governance in asset valuation. So in this presentation, we will navigate the Indian regulatory landscape with the cutting edge tools, methodologies, and compliances which are expected from the professional valuers. So in this presentation, we will discuss about the digital transformation of valuation practice. First, we will discuss about AI integration. So AI, it is based upon many things, machine languages for which you need machine learning and artificial intelligence, and how they are integrated in modern day evaluation modeling. Then we will discuss about the big data analytics. So we know there is large vast data available on the internet. So when you have to analyze that data, it is not possible that you can analyze that data manually. For that, you need certain tools. So this AI is the best tool. So big data analytics is a part of AI. With the help of a large amount analysis of amount of data, you can make your work more authentic than automation and intelligence. So with the help of big data analysis and other things, and of course automation of your work, you give the data required, it will
analyze each and every part, and then it will give you the most reliable results. And scenario testing and decision support systems. So depending upon the conditions, it will give you the best results. And how it is obtained, we will discuss about that. And then security and compliance. So in today's scenario, cyber security protocols are very important. We will discuss about these things, cyber security protocols, and of course, we will discuss about regulatory conformance. Whenever you have to do valuation, you have to do the valuation as per the regulatory compliances. And then the most important things about a valuer is ethics and standards. So ethics means you have to do the valuation within the legal boundaries, and you have to Sir, maintain the sorry to interrupt. professional Can you please responsibilities. maximize the presentation size, sir? Thank you, sir. So is it okay now? Yeah, perfectly fine, sir. Thank you. Okay, thank you. Ethics and standards means you have to do your works within the legal boundaries and professional responsibilities. And of course, whenever you are doing valuation, you have to take care of IBBI requirements. And of course, you have to do your work, carry out your work as per the standards. So you know, till today, there are no standards which have been given either by IBBI or any other regulatory authority. Some of the RVOs, they have their own valuation standards, or otherwise as per IBBI regulations, you may use any international valuation standard, global valuation standards, or the valuation standards which are given by your RVO. So we will discuss these things in the coming slides. So why AI and data governance matter in asset valuation? First thing, it will be a foundation of financial stability. Asset valuation serves as the bedrock of India's financial architecture, underpinning critical functions across taxation policy, insolvency resolution frameworks, banking sector, health assessment, and investment decision-making processes. Accuracy and reliability of valuations directly impact government revenue, creditors' rights, investors' confidence, and overall market stability. So the traditional valuation methods, though they are robust, they face challenges in processing vast data sets and adapting to rapidly changing market conditions. This gap creates opportunities for technological innovations while simultaneously demanding strict governance to prevent systematic risks. So that is why this AI data governance is required in asset valuation, because the traditional valuation methodologies, we have been using so far the traditional valuation methodologies, and we rarely face any problem so far.
But when you are using, you have to face challenges in processing vast data sets. So now, up till now, what we were doing, we were collecting the data, and at the most we were using spreadsheets, Excel, etc., to do our valuation works. But if you have to analyze a vast data, so your spreadsheets have certain limitations, and also you cannot access vast data directly. So for that, you need the help of artificial intelligence. So to take care of these things, we had certain opportunities for technological innovations. But at the same time, whether we are using AI, we have to take care that it requires strict governance to prevent systematic risks. So, how the AI has revolutionized the valuation profession, the AI revolution in valuation, we will discuss that. Emerging in artificial intelligence technology are fundamentally transforming how assets are valued across real estate, financial instruments, intellectual property, and distressed assets. So, whether it is real estate, whether it is financial valuations, whether it is plant and machinery valuation, intellectual property valuations, or in the case of distressed assets, AI has emerged intelligence technologies which are transforming these as valuation processes. So, main thing in AI is machine learning algorithms. So, machine learning algorithms, what they can do, they can analyze millions of data points. They can identify subtle market patterns. These are the things which you need in valuation. First thing, you need to analyze millions of data. So these machine learning algorithms, they can analyze these millions of data points. They can identify subtle market patterns. They can, of course, the things which we cannot do manually. That is to predict future trends. But these AI tools, they can also predict future trends, and they can generate valuation with unprecedented speed and granularity. See what are the benefits of this AI, how it has transformed the valuation field. So, but this technological leap introduces a complex governance challenges, including algorithm bias, data quality concerns, model opacity, accountability gaps, and potential for systematic errors that could propagate across interconnected financial systems at scale.
So we will now discuss about this thing in the context of regulatory response and mandate. Indian regulatory bodies, Central Board of Direct Taxes, there are certain bodies which are regulating the valuation field in India. First one is Central Board of Direct Taxes, then Insolvency and Bankruptcy Board of India, that is IBBI, with which you are registered. Then, of course, Indian banking associations are increasingly mandating robust data governance and AI oversight frameworks. These requirements reflects growing recognitions that technological advancement must be accompanied by proportionate safeguards. So that is important thing. These requirements reflect growing recognition that technological advancements must be accompanied by proportionate safeguards. The regulatory evolution encompasses transparency requirements, auditability standards, professional certification norms, incident reporting mechanism, and accountability frameworks designed to harness AI's potential while mitigating its inherent risk in valuation context. So now we will discuss about the evolution of valuation from manual to AI powered. In the traditional approach, what we were doing, we collect the data manually and we carry out spreadsheet based analysis, and this has been dominating the valuation profession for decades. So valuers relied on limited comparable transactions and subjective adjustments and time intensive research processes. So we were having limited market data accessibility. Then there were chances of human calculation errors, and maybe we may be using inconsistent methodology. The process was time consuming, and in complex scenario, this process was very difficult to carry out. So with the advent of modern digital paradigm, today's valuation landscape leverages artificial intelligence, big data analytics, and automated systems to enhance accuracy, efficiency, and consistency across asset classes. So in the manual, we were having limited market data accessibility, but here we have real-time market and intelligence. Then algorithm precision. So there was certain chances of human calculation errors that will be reduced by algorithm precision. Then in manually, you may be using inconsistent methodology, but here there is a
There are standardized frameworks to carry out the work. Then manually processing was time consuming process, but here it is a rapid scenario analysis. And traditional approach was difficult in complex scenario, but with the help of AI powered modern digital, it enhanced risk modeling. So this is how it makes different from traditional approach which we have been using so far. So we will discuss now, we will discuss about AI integration in valuation, which is revolutionizing the asset valuation model. So how these machine learning applications are being integrated in valuation modeling? Artificial intelligence and machine learning algorithms are transforming how valuers approach asset pricing, market analysis, and risk assessment. These technologies enables more sophisticated modeling techniques that adapt to market dynamics and identify patterns invisible to traditional methods. First one is predictive analytics. So with the help of machine learning algorithms, we can analyze historical data to forecast future asset values with greater accuracy, incorporating thousands of variables simultaneously. See here, with predictive analytics in AI and with the help of machine learning algorithms, what we can do? We can analyze historical data to forecast future asset values. So this is most important thing when you are doing valuation. Basically, your aim is to forecast future asset value. How it will, what will be its value in the future. And for that you need greater accuracy which will be provided by AI, because here we can incorporate thousands of variables simultaneously. Then what else you can do? You can have pattern recognition. So AI identifies subtle market trends and correlations that human analysts might miss, improving comparable selection and adjustment factors. And third thing is automated valuation models. AVM, they are simply called AVM. They provide instant preliminary valuations for screening purposes, freeing valuers to focus on complex analysis and professional judgments. So nowadays you can have automated valuation models which are provided by certain companies which you may use, and with the help of these models you can instantly find preliminary valuations. So the time which you have to spend on these preliminary valuation, that you can do within few minutes
concentrate on or focus on complex analysis and professional judgment. What are AI algorithms? Artificial intelligence, it refers to simulation of human intelligence in machines, basically, allowing them to perform the tasks that typically require human cognitive functions such as learning, reasoning, problem solving, perceptions, and decision making. So, all these things have been incorporated in certain algorithms in the AI. These things, learning, reasoning. So, as a human, what you have to do? You have to do learning. You must have reasoning for giving your opinion about anything. You must have the competency of problem solving, perceptions, and decision making. All these things have been incorporated in certain algorithms in the AI. So we will not go in details. We will just go learn the names. First one is AI search and optimization algorithm. Second is AI supervised learning algorithm. Then AI unsupervised learning algorithm. Then AI algorithm based upon neural networks. Then AI reinforcement learning algorithm. AI algorithm for computer vision. And in the end, it is AI algorithm for natural language processing. Means whatever the things a human should have, all these things have been incorporated in certain algorithms in the AI, which it can use for analysis purposes. And of course, the thing which you must know is big analytics. What big analytics, data analytics use? It uses advanced analytical methods. And what you can do with the big data analytics, you can extract important business insights from bulk data sets. Within these data sets lies both structured, means organized data, and unstructured, means unorganized data. And from a vast amount of data, you can extract the things which you need with the help of big data analytics. Its applications cover almost all industries such as healthcare, education, insurance, AI, retail, and manufacturing, and of course, our profession, that is valuation. So, these two things are very important. So, the main things we will be discussing, as what you have discussed in the last slide, and what are the things from these algorithms which are important from valuation point of view. First one is natural language processing. So we will discuss only those things which are important from our professional point of view, profession point of view. First one is natural language processing. So NLP, natural language processing algorithms, these do, they extract valuation relevant information from unstructured data sources.
So remember, what is NLP? They extract valuation relevant information from where? From unstructured data sources, which including financial reports, property descriptions, regulatory filings, and market commentary. From these sources, they extract valuation relevant information. So this automates the research phase and ensures comprehensive data gathering. Next is we have learned that is computer vision for asset assessment. So in AI there is a process that is called image recognition technology. So image recognition technology, what it does, it analyzes photographs and satellite imagery. It analyzes photographs and satellite imagery to assess property conditions, verify asset existence, and estimate maintenance requirement, particularly valuable for plant and machinery and real estate valuations. So see, with the help of AI, what you can do, especially for plant and machinery valuers and for real estate values. First thing is they, from the photographs, if you provide the photographs and from, of course, from the satellite imagery, what we can get? We may get to know the conditions of the property. And second thing, we may verify whether the asset exists or not. That is important. Verify asset existence. Then we can estimate the maintenance requirement of the asset, whether it is plant and machinery or for the real estate valuation. And the third thing is ensemble learning models. So basically here we combine a number of AI algorithms instead of a single method. Means combining multiple AI algorithm which may produce more robust valuation than any single method. So ensemble approaches reduce bias, improve accuracy, and provide confidence for intervals for valuation conclusions. So see here, with the AI we can use a multiple approaches instead of using a single method. And what it will lead to, it will lead to reduce seeing bias, and it will improve accuracy, and of course it will provide confidence intervals for valuation conclusions. So next is critical considerations for AI adoption. First one is professional judgment remains essential. So it does not mean that if you are using AI, you will take these results are given by AI directly. Your
professional judgment remains essential even after the use of AI. So AI tools support but cannot replace valuers' expertise, market knowledge, and critical analysis. So it does not mean that you use AI tools and you will give the report as it is. Your professional judgment, your knowledge about the market, and critical analysis. These things cannot be replaced by AI. So the valuer must understand model limitations, and then of course they must validate outputs and apply professional skepticism to AI generated results. So see here, even after using AI, it is your duty to apply your expertise, your market knowledge, your critical analysis to validate the results which are given by AI. Though they have done a lot of things we have done a lot of things with AI, but remember, AI will be doing whatever the data is available on internet. Next is model transparency and explainability. So there are certain models available. You have to check. Values must be able to explain how AI models reach conclusion. Black box algorithms that cannot be interpreted or justified may not satisfy regulatory requirements or withstand legal scrutiny. So you got the results, but you have to check that the results whether the results given by certain models they are justified and they are satisfying the regulatory requirements for which you are doing valuation, whether you are doing it for IBBI or CBDT or for banking purposes. So the results given by AI, you have to check it whether they are conforming to the regulatory requirements of that particular regulatory authority and whether they withstand legal scrutiny. This is your duty to check even after using these AI or ABMs and training data quality. AI models are only as good as their training data. Biased, incomplete, or outdated data sets will produce flawed valuations. So what AI will do? So it will search the data which is available as on date for that particular thing which you are looking for. And if the data is not accurate, incomplete, or if it is outdated, what it will do? It will lead to flawed valuations. So continuous model validation and recalibrations are essential. So there are certain valuation models available in the market which you can purchase and with and you can use that for doing your valuation work. But the problem is that maybe that let us suppose that IBB has made certain changes in the valuation standards.
And then you have to incorporate these changes in the valuation models. So that is recalibration are essential. And of course, continuous model validation is essential. It is not that you got today and it will work for life. It has to be recalibrated after a certain period of time. Now we will discuss about what is big data analytics, which is transforming valuation across different asset classes. First, we will discuss big data in real estate valuation, how this big data analytics is being used in real estate valuation. So you know the real estate sector generate massive volumes of data from transactions, listings, demographics, economic indicators, and geospatial sources. Advanced analytical platforms integrate these diverse data sets to provide unprecedented market intelligence and valuation accuracy. So you know in real estate valuation, what are the things mainly used? First thing is transactions. So you need data from the transactions. You need data of listings. What are the listings available at certain period of time of the type of asset of which you are doing valuation? Then demographics, economic indicators. So these and geospatial sources. So out of these, many times you cannot use your manual processes for these economic indicators and geospatial sources, which you can do with the help of big data analytics. So advanced analytical platforms integrate these diverse data sets to provide unprecedented market intelligence and valuation accuracy. So first is transaction databases. So comprehensive historical sales data with the property characteristics enabling sophisticated comparable analysis and hedonic pricing models. So these are the things which are necessary for your valuation process. Means comprehensive historical data with property characteristics. So this historical sales data is required for sophisticated comparable analysis and of course for hedonic pricing models. So what is this hedonic pricing model? You have all of you have studied this during your MEP training. What is hedonic pricing model? Anybody? जी योगेश कुमार जी. Yes, sir. What is this hedonic pricing model? We have studied this in I our think MEP. this approach we learned in environment subject share. No, sorry. Sir, it's a comparable metrics only. हाँ जी. Hello.
This is a जी weightage सर. weightage model, sir, I think. In which approach you have studied this hedonic pricing model? Market approach. Market approach. Market approach, sir. So we have studied 50 this hours in market approach. 50 hours So में हमने ये basically सब what पढ़ा है। happens is that multinational companies are what they do based upon the data, they prepare some models. Means let us suppose they have a certain equation for if the number of bedrooms are two bedrooms with attached bathroom, number of kitchens, number of uh, pools in the property, availability of garden, nearness to the approach road. Based upon certain factors, they make certain equations based upon statistical data. Then, by simply putting the things required, such as number of bedrooms, number of bathrooms, or other conditions, we can directly find out the valuation of that particular asset. Though this valuation will not be accurate, but this is a way what they do for preliminary valuation analysis. That is hedonic pricing model. We have studied there a number of models, number of approaches in market approach. So it was not weightage approach. And then geospatial intelligence. That is GIS data, geographical data. Layers reveal location attributes, accessibility amenities, environmental factors that significantly impact property values. So many of wires or other things, you have this GIS data, GPS GIS data. With the help of this data, you can reveal the location attributes of a property in real estate valuation. You can check the accessibility. You can check the amenities available. You can check the environmental factors of the property of which you are doing valuations. And these factors, of course, significantly impact property values. And next is demographic analytics. In demographic analytics, see here, population trends, income levels, and household characteristics. What these things do? Why they are important? Why property, population data, or income levels, or household characteristics are important? Why they are important? Ji Yogesh Kumar ji. Why these things are important? Why population trends are important? Why income levels are important? Or other These things comes are under important? the four characteristics of the real estate property, which comes under economic factor, physical, social, and legal. The population trends, income level comes under economic factor. Household characteristics comes under social factor. So basically, these are the things which reflect the demand and supply part. Based upon these things, we can find out about the demand and supply part of the asset, of the type of asset you are doing valuation. And also you can inform rental rate projections based upon these things.
So basically, what happens is when you are doing evaluation manually, you cannot do these things, demographic analytics. It is not easy to do it manually. Though in many of the valuation formats you are getting from the banks, they incorporate these things. But you cannot do these things manually. So you can do it with the help of AVMs, automated valuation models, which incorporate AI. How AI is helping in securities valuation? So basically, AI, securities valuation, they are based upon data. So here we have data-driven approaches. Basically, security valuations are data-driven. So big data revolutionizes security valuations by providing real-time market information, alternative data sources, and sophisticated analytical capabilities that enhance both fundamental and technical analysis approaches. So what it can do market microstructure data analysis, high frequency trading data, they provide deeper insight into price formation and market efficiency, crucial for value determination. So another thing is with the help of AI, you can have alternative data sources for security valuation. So satellite imagery tracking, retail traffic, social media sentiments analysis, web scraping of pricing information, and credit card transaction data offer leading indicators of company performance before traditional financial statements. And with the help of this AI, you can have cross asset correlation. So big data platforms identify the relationship between securities across markets, sectors, and geographies, improving relative valuation models and risk assessment. With the help of AI, what you can do? You can identify a relationship between securities, which securities across market sectors, means across different markets and geographics, improving relative valuation models, these are the things which you cannot generally do manually. And in the case of plant and machinery, how AI will be helpful? First thing is equipment performance databases. IoT, it is called Internet of Things, sensors and maintenance records provide actual usage data, operating efficiency metrics, and remaining useful life estimated for industrial assets. Means with the help of IoT,
for maintaining the records. So what IoT sensors can do? They will provide actual usage data, operating efficiency of the machines, and remaining useful life of the machines. So for doing the valuation, plant and machinery values require these things. We can have aggregated auction results, dealer pricing, and private sale data from global markets enable more accurate valuation of specialized equipment. And of course, you can track technology obsolescence with the help of AI. So monitoring technological advancement on that, only then you will be able to do these things. This data cleaning, this monitoring of data. So these are the things which are beyond our scope as a valuer. But in today's scenario, you have to keep up with the changing patterns, changing things, and for that you need to equip yourself with statistical knowledge of statistical tools. Next is automated risk analysis framework. So in modern valuation practice, these increasingly relies on automated systems that continuously monitor risk factors, assess probability weighted scenarios, and provide early warning indicators. These tools enhance the valuer's ability to identify and quantify risks that might impact asset values. See here, with automated valuation models, there are certain things which are incorporated. There are automated risk analysis. And these are very important. So because you have to take care of asset probability, because the valuation which they will be doing based upon probability weighted scenario. And of course, they will be providing you warning indicators. So first thing is market risk assessment. Automated monitoring of interest rates, volatility indices, liquidity conditions, and market sentiments indicator helps to identify timing and market related risks affecting valuations. So as a valuer, this is a very important thing, market risk assessment, which AI tools can automatically monitor. What are the things involved in it? Are interest rate, volatility indices, liquidity conditions, and of course market
sentiment indicators. Next is credit and counterparty risk. So real-time credit scoring, default probability models, and exposure tracking enable rapid assessment of credit-related valuation adjustments. And next is operational risk factors. Monitoring systems track management quality, regulatory compliance, environmental issues, and litigation exposures that impact asset values. ठीक है संदीप जी, we may have a short tea break. Yes, sir. Yes, sir. Sir, कितने टाइम के लिए? For 15 minutes. Sir. Okay. So friends, it is 11:25 now. We will take a short tea break for 15 minutes. We will join sharp at 11:40. Thank you, sir. Till then, you can switch off your screens. Thank you. So friends, welcome back. And please be attentive for the attendance purposes. We are going to continue with the session. Is scenario testing and sensitivity analysis. Automated scenario testing tools enable valuers to rapidly model multiple future states and assess valuation sensitivity to key variables. So see here, in case you are doing valuation, you cannot do this thing. But with the help of automated valuation models, you can assess future states, multiple future states, and assess valuation sensitivity to key variables, which is not possible in manual valuation. So what it will enhance transparency and help stakeholders understand the valuation or uncertainty. So this is the most important thing which you can only do with the help of automated valuation models or AI. And then Monte Carlo simulation. So these are the things which the persons who are conversant with the statistical tools, they know this, what is this Monte Carlo simulation. So probabilistic modeling generates thousands of scenarios, producing valuation ranges and confidence intervals rather than a single point estimates. So which if you do manually, it will take a lot of time, but with the help of these tools, you can carry out this simulation, that is Monte Carlo simulation. Next is stress testing protocols. So automated stress tests evaluate how extreme but plausible market conditions will impact asset values. So see here what you can do with these things.
extreme but plausible market conditions that would impact asset values. So, with the help of this, you can enhance risk management decisions and then dynamic sensitivity analysis. Interactive tools show how changes in discount rates, growth assumptions, market conditions, or other input affects valuation conclusions. So these are the things which can only be done with these AI and other tools, automated valuation models. Next is data intelligence systems. So in data intelligence, first thing is data integration. What it does, it consolidates information from different multiple sources. So with the help of AI, you can integrate the data from different multiple sources. And after this integration, what you can do, you can carry out analysis also with the help of AIs. The data you have gathered, consolidated, it can be analyzed by applying machine learning to identify patterns and generate insights. Means you can produce actionable recommendations. Then you can learn and improve. You can continuously refine models based upon outcomes. And based upon these things, you will be able to produce informed professional judgment, which you can't do manually. So these are the things which you can do with the help of AI. So decision intelligence platforms combined data analytics, AI, and behavioral science to augment human decision making. Means these things can only be done through these decision analysis platforms, intelligence platforms, which combines data analytics, AI, and behavioral science to augment human decision making. For valuers, these systems synthesize complex information and present insights that improve judgment quality while maintaining professional responsibility. See here how these things can change the whole scenario. So what are the benefits of and limitations of automation? So first thing is time saving. With the help of these automated valuation models, you can have a time saving up to 70%. Means it will lead to reduction in the routine analytical tasks. And with the help of these tools, you can reduce errors up to 40%. Means there will be decrease in calculation mistakes and more scenario analyzed per engagement. So you can analyze three times the scenario, at least three times the scenario which you might have done with manual valuation methods. So these are the
benefits. And what are the critical limitations? So critical limitations is that which we have already discussed, that though they are having lot of benefits, but the thing remains, which is very important, is your judgment, your professional judgment. These automated systems cannot replace your professional judgment, market knowledge, or ethical reasoning that you have to incorporate in the end. So values remains fully responsible for the conclusions reached using automated tools and must be able to explain and defend their methodology independently of the technology employed. So whether you have used whatever method you have used, it is your duty to defend your valuation, defend the methodology you have to have used, explain the methodology you have used independently of the methodology you have employed. And next is security and confidentiality, cybersecurity and digital evidence maintenance. Cybersecurity imperative for valuation professionals. That is very important. So though this is a very vast subject, cybersecurity, so we will be concentrating only on that part which is important from our valuation point, professional point of view. We will So what conduct, are I want to add something, sir. We will conduct a special class for this with a certain expert of certain or some other agency in forthcoming days before March 26. But as of now, as a valuation profession, what is need to be understood by a valuer is explained here, sir. Yes, sir. Please continue, sir. Sorry to interrupt. so cybersecurity imperative for valuation professionals? So valuation assignments involve highly sensitive financial, strategic, and proprietary information. So data breaches can result in significant legal liability, reputational damage, and professional sanctions. So in today's scenario, you know these things are very important. That data breaches, once the data you have uploaded on the internet and it is assessed by someone which should not have been there. So what it will do, it will have a significant legal liability. It can cause reputational damage not only to you as a valuer, to the client for which you are doing valuation. If the data is breached, he may may lead to reputational damage not only to the valuer, to the client also, to our profession also, and it may lead to professional sanctions against you by the authority or by the RV. So you have to take care of these things. So robust cybersecurity protocols are no longer optional. They are essential to the professional practice. So now these things are not optional. These are essential for our professional practice. So first thing is that you in very near future you may have to go for AVMs, AI, and other things in modern technology. Otherwise, you will lag behind. But then you have to take care of the things
such things such as cyber security. And the third thing, you have to make yourself conversant with statistical tools. Only then you will be able to use these things perfectly. So first thing is data encryption. Implement end-to-end encryption for data at rest and in transit. So many times you have seen in your WhatsApp chats that the data is end-to-end encrypted. So you have to do this thing. Implement end-to-end encryptions for data at rest and in transit. Means the data which is transferred from the client to you, or whether it is at rest or in the transit, it is your duty that it should be encrypted. That means no one else should have access to this data. So all valuation files, client communication, and working papers should be encrypted using industry standards for protocols. So you may learn other things about it in the session which Sandeep we have told that we will be having one session for cybersecurity imperative for valuation professionals. As of now, you must know that AES 256 are the minimum standards, industry standard protocols which you have to follow if you are using these modern digital tools. Next is access controls. You have to enforce multi-factor authentication. So as you know, many times when you may you are using Google Mail, Gmail, and you can have a password, only then it will be opened. Similarly here, you have to enforce multi-factor authentication before accessing the data. Role-based access permissions. So in your firms, it is not that everyone can access the data. Only that persons who are related to that data should be able to access that data. Means role-based access permissions. And then regular access reviews. You have to carry out and check these things. Limit data access to personal with legitimate business on a project by project basis. So it is not that a single legitimate data access is available in all the project. You have to check it from that project to project basis. So many things you get from AI, AVM, etc. that seems to be very useful, fruitful, but at the same times they bring a lot of things which you have to take care of. Otherwise, it may lead to your professional damage. And then network security. So deploy firewalls, intrusion detection systems, and virtual private networks. So many times you have these things, certain firewalls, detection systems in your computer systems. You must have intrusion detection systems and virtual private networks. Though these many things are built in latest Windows versions such as Windows 11 or upper versions, but even then you must employ these things and check.
So regularly update the security software and conduct vulnerability assessment of all systems handling valuation data. So you must alloy these things in your computer systems so that your data is not assessed by some illegal persons. Then, if certain things happen, even after having all these things in place, then if certain things happen, certain incident happens, then what you have to do? You have established clear breach notification procedures, incident response teams, and recovery protocols. So for the things which may happen, you have to establish clear breach notification, incident response teams, and recovery protocols. Test response plans regularly and maintain cyber insurance coverage. Means if you have the put in place the things, then it is your duty to test the response plans regularly. And of course, you must maintain cybersecurity insurance coverage. In today's scenario, these things are most important. Next is confidentiality and digital evidence management. So nowadays, digital evidence may be used in legal systems. And the other thing is maintenance of confidentiality. So how you can do that? First is you should know what are the confidentiality obligations and how you can maintain that confidentiality. So confidentiality obligations, professional standards and client aggregate agreements impose strict confidentiality duties. Digital systems must be designed to prevent unauthorized disclosure. Secure file sharing platforms with audit trails. First thing is secure file sharing platforms with audit trails. Second is watermarked documents for version control. So you can have watermark on your documents. You know how it is done in different softwares. Then restricted screenshot and download capabilities. So many times you might have seen that when you try to take screenshot of a certain photograph or a certain documents, it is prohibited. You must know how it is to be done. Similarly, many times certain documents you are not able to download. So you must know how to do this restricted download capabilities. And then automatic session times out on inactive systems. As you know, in WhatsApp, you have the option that after certain period of time, all the messages will be automatically deleted. देखिए, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। आप जैसा कि पहले सेशन में और भी पहले काफी डिस्कशन होती रही है पुराने सीपीज में, अगर आपने कोई भी एम्प्लॉय रखा हुआ है
तो उससे आप एनडीए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, जरूर साइन करा कर रखिए। एनडीए का जो फॉर्मेट है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन अगर आपका डाटा किसी भी एम्प्लॉय की रीच में हुआ और उससे आपने एनडीए साइन नहीं कराया हुआ, देन यू कैन बी इन ट्रबल। तो आपकी इंस्पेक्शन में वो नेगेटिव मार्किंग होगी। और दूसरा, आपका जो अपना डाटा है वो हमेशा, किसी भी क्लाइंट का डाटा आप कोशिश करिए जो नॉन रिलेटेड एम्प्लॉय है, जिसका एनडीए आपसे साइन नहीं हुआ हुआ, उसके शेयर में ना हो। आपने पीछे कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं, कुछ वैल्यूअर्स अभी भी फेस कर रहे हैं जिनके ऑफिस से डाटा लीक हुआ और उसके बाद में काफी प्रॉब्लम्स फेस हुई, इंसॉल्वेंसी में भी और दूसरे रिपोर्ट्स में भी। तो ये आप अगर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो वो ज्यादा बढ़िया है। अगर काम कर रहे हैं और डाटा आपके ऑफिस से लीक हो गया, दैट इज द वर्स्ट कंडीशन। तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई इट इज दिस स्लाइड इज बीइंग एडेड इन दिस सेशन। तो आपको सबसे पहले तो जो भी आपके पास एम्प्लॉय है उससे एनडीए साइन जरूर करवाइए। उसकी जो भी उसके थंब इंप्रेशन भी लीजिए, ताकि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बने, उसको पता हो कि मैंने साइन किया हुआ है और अगर मैं कुछ करूंगा तो मैं लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करूंगा। और उसके अलावा उसका आईडी प्रूफ वगैरह सारा आप अपने रिकॉर्ड में रखिए, और एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन ये आपसे मांगा भी जा सकता है, फिजिकल इंस्पेक्शन आपके ऑफिस की होती है तो। और उसके अलावा आप कोई भी ऐसा डाटा किसी भी अनवांटेड एम्प्लॉय की या टेम्पररी एम्प्लॉय की या नॉन रिलेटेड एम्प्लॉय की रीच में मत रखिए, जो रिपोर्ट आप कर रहे हैं या वो जो कि पब्लिक में आने के बाद उसका क्लाइंट का या पब्लिक का या इंस्टीट्यूशन का लॉस कहीं पर भी हो सके। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। So this is thank you Sandeep ji for your valuation input. So automatic sessions timeouts on inactive systems, as Sandeep ji have very clearly explained to you. Then secure disposal protocols for digital media. This is what you can do for maintaining confidentiality, as you have confidentiality obligations to the system. So next is digital evidence requirement. Mr. As you Dishant know, Agarwal, am I audible to you? Mr. Dishant Agarwal. Yeah, good morning, sir. Good Good morning, sir. morning. Have you read the protocols sent yesterday on your mail? Yes, Proper sir. sitting protocol. सॉरी सर, वो मेरे को थोड़ा फीवर है इसलिए Sir, लेट you गया are था। young, you are a young person. मेरे जैसा बूढ़ा आदमी है तो बात अलग है। अगर फीवर है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मीन्स आप अपने कंफर्ट जोन में रहिए, लेकिन सिटिंग प्रोटोकॉल्स थोड़ा फॉलो करिए। ये ऑब्जर्वर्स की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस आई हैं, दैट्स व्हाई आई एम पासिंग टू यू। आई एम सॉरी फॉर इट। थोड़ा केयर करिए अपनी, और थोड़ा सा सिटिंग प्रोटोकॉल्स को मेंटेन रखिए। अभी ये ठीक है सर। अपॉर्चुनिटी है कि आप घर में बैठ के अटेंड कर रहे हैं। अगर ये फिजिकल होता तो बड़ी मुश्किल होती। तो थोड़ा सा जो आपको जी मेंटेन करने के लिए प्रोटोकॉल्स कल भेजे गए उसको थोड़ा फॉलो करिए प्लीज। इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर। thank you Sanjeev ji. So digital evidence requirements, in today's scenario, digital evidence is may also be used in legal entangles. So valuation working papers must be maintained in admissible format for potential legal proceedings. So tamper evident file storage with blockchain validation. Complete audit logs of document accessible and modifications. Metadata preservation for all electronic files. Regular backups with off-site secure storage. So many times what happens that if you are doing a lot of work on your computer systems, that may be affected sometimes due to certain hardware or software problem. So you have to back up your data, digital data. So regular backups with offset secure storage. You cannot say that my computer was there was certain problem in my computer, that was why the data was not we was not able to store the data. It is your duty to store it in a digital format nowadays, and which may be used as a digital evidence.
at a certain point of time. आपको So याद होगा for इट वाज अ पार्ट ऑफ सिलेबस के डाटा मेंटेन रखना अप टू 3 इयर्स, एंड अगर उसके उस पर्टिकुलर वैल्यूएशन के ऊपर या उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लिटिगेशन या कोई कोर्ट केस है, तो जब तक वो कोर्ट केस सेटलमेंट नहीं होता तब तक डाटा प्रिजर्व करना आपकी ड्यूटी है, और 3 इयर्स तक तो कंपल्सरी डाटा आपके पास होना ही चाहिए. दैट इज अ कंडीशन मेंशन इन द कोड ऑफ कंडक्ट आल्सो. तो इट वाज अ पार्ट ऑफ सिलेबस आल्सो, एग्जामिनेशन के लिए 50 आवर्स में ये इट वाज अ पार्ट ऑफ सिलेबस. तो ये डाटा आपको 3 साल तक तो प्रिजर्व रखना ही रखना है. अगर वो प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन है या उसके बारे में आपको कोई नॉलेज होती है, तो जब तक वो सेटलमेंट नहीं होती तब तक आपको डाटा अपने पास सिक्योर रखना आपकी जिम्मेदारी है. यस सर, प्लीज कंटिन्यू सर, इट इज योर लीगल. I would suggest one more thing here, Bansal ji, can I? yes sir, यस सर, यस सर, प्लीज. See, इसमें जो data protection वाला है, इसमें ना I would further suggest कि we should keep data at 2 places at least. Maybe one in the laptop, maybe one in the other, some storage where it doesn't get lost. Sometimes the laptop can be corrupted. Yes, The sir. data can be also lost there. So हार्ड डिस्क I would में और एक क्लाउड में आप मेल के ऊपर भी डाटा रख सकते हैं, नहीं तो मेल परचेज absolutely. कर सकते हैं, क्लाउड परचेज कर सकते हैं. और हार्ड डिस्क में जैसा पवन जी ने बताया, बहुत सही बात है, कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में प्रॉब्लम आती ही है, आ ही जाती है और आनी ही होती है कभी ना कभी. तो बेटर है कि हम डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहीं ना कहीं जरूर सेव रखें, इधर हार्ड डिस्क पर, पेन ड्राइव में. आजकल पेन ड्राइव भी 64 GB तक अवेलेबल है इजीली. और अगर आपका डाटा इससे बड़ा है तो बड़ी हार्ड डिस्क आपको अवेलेबल है, 1 TB 2 TB तक. अदरवाइज जैसा पवन जी ने बताया, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक वे में सेव कर सकते हैं, क्लाउड परचेज कर सकते हैं किसी रिलायबल सोर्स से, या गूगल के ऊपर, मेल के ऊपर भी आप 15 GB तक तो फ्री है, उसके ऊपर आप उसको परचेज कर सकते हैं. अप टू 1 TB और 2 TB तक आप उसको परचेज कर सकते हैं. लेकिन यहां पर आपको मनी स्पेंड करना वर्थ है, करना चाहिए Absolutely. चाहिए. क्यों Hard पवन जी? drive can be purchased. Hard drive or unused mobile, old mobiles, you can keep it in old unused mobiles also. यस यस, देयर आर सो मेनी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन. पवन जी ने Yes. बिल्कुल सही आपको गाइड किया है और राइट टाइम पे उन्होंने आपको बताया. आप इसको डाटा को जरूर सेव करके रखें, कहीं ना कहीं जरूर इसको एक ऑल्टरनेटिव क्लोन बनाकर जरूर रखें. थैंक Sir, यू. cloud is the safest. Cloud is the safest, sir. यस सर. this is Cloud what I is the have told you. So regular backups with off-site secure storage. This is what I have already told you. You may have it on hard drive, you may have it on cloud, you may have it on your mail, or whatever source you have, you must maintain at least duplicate data storage. So retention policy compliance with the legal requirements. So Sandeep have already told you that as IBBI regulations are concerned, you have to maintain record for certain period of time, or in case of any legal entangle, unless that legal case is resolved, you have to maintain that record. So next is what we have already discussed: cloud computing and third party risk. So there may be certain risk involved when you are doing in cloud computing. You are retaining data on the cloud. So we will discuss on about that, how you can save yourself from these things, cloud computing and third party risk. So many valuation tools and data sources operate in cloud environment or involved third party vendors. So whenever you purchase automated valuation models, so these are provided by third parties, and most of the times they operate in cloud environment. Means then all the persons who have purchased that automated valuation models, they are on the same cloud environment. So values must conduct appropriate due diligence on technology partners and maintain
oversight of data security practices. यस सर, मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा फ्रेंड्स। कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में क्लाउड पर जाकर अपनी एंट्री मत करिए, कभी मत करिए। अगर आप करते हैं और डाटा अगर आपके कंप्यूटर में सेव हो रहा है देन इट्स ओके। अगर आप उनके क्लाउड पे जाके सेव कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं जब भी एक्सेस कर सकता हूं, आप तो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो उसका डाटा बेस बनाकर और उसको कभी भी कहीं भी सेल कर सकते हैं। तो कभी भी किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर रिलाय मत करिए। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो डाटा ये अश्योर करिए कि आपके ही सिस्टम में स्टोर हो, कहीं थर्ड पार्टी या क्लाउड पर स्टोर ना हो। अगर क्लाउड पर स्टोर हो रहा है, वो जितना मर्जी बोले, अगर सॉफ्टवेयर ऐप एस्टिमेशन या वैल्यूएशन का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जितना मर्जी बोले कि हम शेयर नहीं करेंगे या हम नहीं देखेंगे या नहीं, सब उनके सिस्टम में स्टोर होगा और वो कभी भी कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो आपके लिए एक एटम बॉम्ब है। तो कहीं भी आपको कोई भी सॉफ्टवेयर आप खरीदते हैं वैल्यूएशन पर्पस के लिए इस्तेमाल करने के लिए, तो ये अश्योर करिए, 100% अश्योर करिए, नहीं तो मत करिए, उससे परचेज मत करिए, सॉफ्टवेयर में काम ही मत करिए, आप अपना सॉफ्टवेयर बनाइए। हम नेक्स्ट पार्ट में आज ही आपको बताएंगे कैसे एक्सेल में आप शीट बना सकते हैं और कैसे अपना डाटा अपने सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सिस्टम में कभी भी अपना वैल्यूएशन का डाटा स्टोर मत करिए, सिर्फ रिकॉर्ड पर्पज के लिए। जैसा आपको पवन जी ने बताया, वर्मा जी ने बताया, आप क्लाउड स्पेस अपने हार्ड डिस्क के लिए ले सकते हैं, लेकिन वैल्यूएशन के सॉफ्टवेयर में कभी भी डाटा स्टोर मत करिए। ये हमेशा आपके लिए रिस्की है और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं वो ऐसा कर रहे हैं, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन सुनने में आया है को आपको डाटा स्टोर करके सारा सिंक्रोनाइज करके और आगे वेबसाइट्स को बेच रहे हैं कि वहां पर इतनी वैल्यू होगी, वहां पर इतनी वैल्यू होगी, वहां पर इतनी वैल्यू होगी। तो वो आपके लिए रिस्की हो सकता है। कई बार कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपकी तरफ से लीक ना भी हो, तब भी आपको आपकी इन्वॉल्वमेंट अनवांटेडली हो जाएगी। तो कभी भी ऐसा रिस्क मत लीजिए, थर्ड पार्टी से इन्वॉल्वमेंट मत करिए डाटा स्टोर करने के लिए। यस सर, प्लीज ओवर टू यू सर। So first thing is vendor assessment. So whenever you take a AVM from certain third party vendor, you must assess security conditions. So if you for details you can search for that. As far as the security certifications are concerned, minimum ISO to 27001 SOC2, data residency policies and breach history before engagement. You have to check these things. And then not only at the time of purchase, you should have regular ongoing monitoring. So you should regularly review vendor security postures, request updated compliance reports, and reassess risk at least annually. So next is contractual protections. Ensure agreements include data ownership clauses, security requirements, breach notification terms, and audit rights. So you should ensure these things, that data ownership, whatever the data is, it should you have used on that platform, it should be your ownership. So you should check the data ownership clause. So many times they may have write that the data you have uploaded, that will becomes the proprietary property of that vendor. So many times what happens is when you are have purchased, so sometimes you have to click on I accept, and a number of terms and conditions are written there. We hardly go through that. But here I request you to go through thoroughly through these terms and conditions. There might be certain terms and conditions which may harm you sometime, and you should look for data ownership clauses in that terms and conditions, then security requirements,
breach notification terms and audit rights, means who has the right for audit, and exit planning. So maintain ability to retrieve all the data and ensure secure deletion from vendor systems upon relationship termination. See here, means let us suppose you have terminated the relationship with the vendor from which you have purchased this AVM, and it is your duty to ensure that whatever data you have uploaded on that platform is deleted from the vendor system. एक चीज And मैं और ऐड करना चाहूंगा, आप कोशिश करिए कभी भी वैल्यूएशन प्रोसेस के लिए कोई फ्री का सॉफ्टवेयर मत इस्तेमाल करिए। अगर आप कोई भी फ्री का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, परचेज करने के बाद तो रिस्क है ही है, जैसा राजविंदर सर ने आपको बताया, लेकिन काफी चांसेस होते हैं अरे मेरा क्या जाता है, फ्री में हो रहा है, मैं वहां पर डाटा अपलोड करूंगा, मुझे रिपोर्ट बनाकर दे रहा है वो। तो ऐसा मत करिए, वो आपका डाटा हमेशा अपने पास रखेगा, वो आपका डाटा आपके पास नहीं जाने देगा। आपको रिपोर्ट दे देगा, आप रिपोर्ट अपनी सेव कर लेंगे, आप खुश हो जाएंगे, ओके यार हो गया, मेरा काम हो गया। लेकिन वो जो आपका डाटा है वो उसके पास चला जाएगा, और क्लाइंट के सारे जो भी क्रेडेंशियल्स हैं सब उनके पास होंगे, और वो कभी भी उसको मिसयूज कर सकते हैं। देन यू कैन बी इन ट्रबल, क्योंकि आपने एंटर किया है, आपके आईपी एड्रेस से एंटर हुआ है। तो कल को कोई कोर्ट में केस जाता है या कहीं भी कुछ होता है, जैसा आप देख रहे हैं अभी काफी कुछ वैल्यूअर्स फेस कर रहे हैं इसके बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, उनके ऑफिस से कुछ चीज लीक हुई थी और वो काफी आगे प्रॉब्लम उसके प्रॉब्लमेटिक हो गई है। तो आपके ऑफिस से कोई डाटा लीक होना हो, लेकिन आपकी गलती से डाटा लीक हो सकता है। जैसे आप सोचेंगे फ्री का सॉफ्टवेयर है, मैं एंटर करूंगा, डाटा एंटर करूंगा, उसका एड्रेस एंटर करूंगा, उसके क्रेडेंशियल्स एंटर करूंगा, पार्टी का नाम एंटर करूंगा, मुझे रिपोर्ट बन के आ जाएगी, दैट्स ऑल। दैट इज नॉट सॉल्व, दैट इज नॉट ऑल। वहां से आपकी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। और कल को अगर ये थोड़ा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हुआ है, केस सेंसिटिव हो गया या कहीं लिटिगेशन में चला गया, तो आप, क्योंकि आपके आईपी एड्रेस से सारा कुछ हुआ है, यू कैन बी इन ट्रबल। आपको ही ट्रेस आउट करना पड़ेगा, और आपको ट्रेस आउट करके वो घूमकर आपके पास पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ख्याल रखिए, कोई भी चीज फ्री की होती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आपको चीज देनी पड़ती है वापस। तो ऐसा मत करिए, कभी भी ऐसा रिस्क मत लीजिए। ओवर टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। so this is very important thing. So many times you should remember that even if you delete the data, even from your computer system or from your mobile, it will remain there. The cyber security personnel, they can retrieve the data anytime. And of course, the persons, the apps you are using, they are able to access your data. So it is not that you have deleted, you think I have deleted the data. So you might have deleted it from your system, from your app, but still it remains there. There are certain tools which can retrieve the data even from the day you have installed that app. So remember that. Then legal ethical boundaries, professional responsibility in digital valuation. Legal and ethical framework, digital tools. While technology enhances valuation capabilities, it also creates new legal and ethical challenges. So professional values must navigate interact intellectual property issues. So you must be conversant with these terms, what are intellectual property issues, algorithm accountability, and fundamental principles that technology assists but does not absolve professional responsibility.
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर हमारा एक स्पेशल सेशन हुआ था। उसकी जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको देखकर कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। अदरवाइज भी आईपीआर से रिलेटेड कुछ वैल्यूएशन एनहांसमेंट है जो एसएफए वैल्यूअर्स के लिए जरूरी है, वो वहां पर ऐड की गई है। तो उसमें जो आपका गुडविल या दूसरी चीजें हैं या कुछ चीजें जो आईपीआर से रिलेटेड है, कॉपीराइट्स एंड अदर्स, वो अगर आपको वैल्यू एडिशन में आपको कहीं ऐड करनी पड़े, एक स्पेशल सेशन हमारा हुआ था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से हुआ था। तो उसमें एक आप उसकी रिकॉर्डिंग का एडवांटेज ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल सीवी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स क्लब में ऑलरेडी ये अपलोडेड है। आप चाहें तो उसको, अगर आपको नहीं मिलता तो आप मुझसे लिंक मांग सकते हैं। यस सर, ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू। So professional values must navigate intellectual property issues, algorithm accountability. See here. So whatever algorithm the AVM or digital tool has used, you are accountable for that. You must be in conversant with these things. So it is not that simply you are using AVM and getting the result, that is not the end. What algorithm it has used, you must be conversant with that also. And the fundamental principle, see here, the main thing, that technology assists but does not absolve professional responsibility. That is important thing. You must remember this thing. That you are, it is just assisting you, but it is not absolving you of your professional responsibility. Next is professional independence. So valuers must maintain independence from technology vendors and data providers. Financial relationship, proprietary algorithms are advocacy oriented tools that compromise objectivity, violates professional standards. So the valuer's judgment must remain supreme over technological outputs. That is what we have already discussed, that your judgment remain supreme over technological output. Then transparency and disclosure. See here that important thing. Another important thing. Valuation reports must disclose the role of technology in the assignment. So these things are may or may not be there in your IBBI standards. But if you are using certain valuation technological models, you must disclose in your valuation report. So as a valuer, it is your duty to disclose the role of technology in the assignment, including all models AI models used, data sources relied upon, and any limitations in digital tools employed. So if you are using certain digital tools, you must be conversant with the limitations of that tools, and in the valuation report you must disclose the limitations of that tool to make your client conversant with the limitations of the work which you have done. Clients and users are entitled to understand how conclusions were reached, because whenever you submit a report, it is your duty to make the clients or users to understand the conclusions you have given and how these were reached. Next is accountability, algorithm accountability. We have already discussed that valuer remains fully responsible for conclusions
reached using digital assistance. If you cannot explain how a model works or validate its assumptions, you cannot rely on its output. So that is important. If you are unable to explain the algorithm it is used, the work done by the tool, or you cannot validate its assumptions, then you cannot rely on its output. So professional liability is not delegated to the software providers. So it is not that you can say that I have used this automated valuation tool, because you cannot delegate your professional liability to the software provider. This is an important thing. Then conformance to IBBI and global standards. So IBBI requirements. What are the IBBI requirements? The Insolvency and Bankruptcy Board of India has established comprehensive regulations for registered values. Technology adoptions must align with these requirements, particularly regarding methodology, disclosure, working paper documentation, and professional competence. So, as far as IBBI's requirements are concerned, they have certain comprehensive regulations for registered values, and you must check whatever digital tool you are using, whether it is confirming or aligning with these requirements, particularly regarding methodology, disclosure, working paper documentation, and professional competence. Then, of course, international valuation standards. So the work you done with the AVM or AI, it should conform with the international valuation standard. So AVS provides globally recognized principles. So many times you have to use these international valuation standards. You might mention this, that I am using this IVS in my valuation report. So you must check that digital valuations are satisfying requirement for approach consistency, basis of value, clarity, and assumption transparency, regardless of technology employed. So what is basis of value? What does this mean? Ji Vijayanand ji. It's a basic. What is this basis of valuation? Basic of valuation is what initially we have assumed, or the data which we have collected, ab initio what we have taken for valuation. Any other input from anyone else? देखिए, ये वैल्यूएशन का फर्स्ट कॉलम में आपको भरना होता है जब भी आप कोई भी वैल्यूएशन करते हैं. अभी आपने न्यू फॉर्मेट देखा है. देखिए, आईबीबीआई एज अथॉरिटी, दे आर डूइंग ट्रिमेंडस एफर्ट्स. They are trying to put
all the things and they are doing all the efforts they can do for Purpose of valuation. sir, wait करिए. They have released a expert committee report proposing major policy reforms for valuation under the insolvency and bankruptcy code. आपको याद होगा मैंने ये ग्रुप में आपके डाला था. उसके अलावा एक वैल्यूएशन रिपोर्ट के ऊपर एक आपको एक डिस्कशन पेपर उन्होंने शेयर किया था. उसकी लास्ट डेट थी. एक्सपर्ट कमेटी पॉलिसी रिफॉर्म्स के ऊपर था. उसके बाद एक वैल्यूएशन अंडर आईबीसी था. उसके बाद वैल्यूएशन डिस्कशन पेपर एक आपको दिया गया था जिसमें आपको एक वैल्यूएशन रिपोर्ट का फॉर्मेट एक डिस्कस किया गया था. पब्लिक कमेंट्स ऑन डिस्कशन पेपर टू स्ट्रेंथन द वैल्यूएशन प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. तो अपनी तरफ से अथॉरिटी पूरे एफर्ट्स कर रहा है आपको हर तरह से फैसिलिटी देने का. लेकिन अगर हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं, अपने आप को अवेयर ही नहीं करेंगे, और हमें आज तक बेसिस ही नहीं पता. काफी हमारे फ्रेंड्स हैं जिनको व्हाट इज मीन्ड बाय बेसिस ऑफ वैल्यू, तो वहां पर आप भरेंगे क्या? आप अगर फॉर्मेट को देखें, आपने किसी ने पढ़ा है जो आपको एक ये पॉलिसी रिफॉर्म्स के बारे में या वैल्यूएशन फॉर्मेट के बारे में? एक 7 दिसंबर लास्ट डेट थी सबमिट करने की कमेंट्स, और एक 10 दिसंबर थी. हमने आपको पूरा वार्न किया था, आपको पूरा उसके बारे में इंटीमेट किया था, आपको पूरा कोशिश किया था अपडेट करने का आपके ग्रुप में कि आप उसको जरूर सबमिट करिए वहां पर अपने कमेंट्स. लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे में से 70% लोगों ने वो पढ़ा भी है कि वैल्यूएशन फॉर्मेट क्या है. अभी आप यूनिफॉर्म वैल्यूएशन फॉर्मेट एक लाने की कोशिश की गई है. प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और सिक्योरिटीज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स के लिए 3 फॉर्मेट रिलीज किए गए हैं अथॉरिटी की तरफ से, और उसके ऊपर डिस्कशन पेपर के ऊपर कमेंट्स मांगे गए थे, सजेशंस मांगे गए थे जो आपको अपलोड करने थे 10 दिसंबर तक. तो अगर आपने नहीं पढ़े, वेबसाइट में है cbnews.in में आपको अवेलेबल है. आईबीबीआई की वेबसाइट, अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है. आप उनको पढ़िए, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाइए. अगर आपने किसी फील्ड में जाना है तो सिर्फ लाइसेंस जरूरी नहीं है. आपको कार चलाने के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं है. आपको कार चलाने के लिए कार की नॉलेज जरूरी है. एक्सीलेटर कहां पर है, ब्रेक कहां पर है, क्लच कहां पर है. अगर आपके पास लाइसेंस है और ये चीजें नहीं आती तो फिर आप एक्सीडेंट करेंगे ही करेंगे. तो आपको ये चीजें जाननी जरूरी है. अगर आपने गाड़ी लेकर हाईवे पर उतरना है तो सिर्फ लाइसेंस जरूरी नहीं है. लाइसेंस तो एक लीगल रिक्वायरमेंट है, लेकिन क्लच कहां पर होता है, ब्रेक कहां पर होता है, एक्सीलेटर कहां पर होता है, और कब इनका इस्तेमाल करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए आपको ये चीजें पढ़नी जरूरी है. तीनों फॉर्मेट में कहा था क्या क्या था, और उसमें बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, बेसिस ऑफ वैल्यू एक फर्स्ट कंडीशन है, तो वो आपको फिल करनी है. आपको यही नहीं पता बेसिस का मतलब क्या है, तो आप क्या भरेंगे वहां पर, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो वहीं पर आप फंस जाएंगे. कोई गलत चीज भर दिया और आपको ये रिपोर्ट आपकी लिटिगेशन में चलेगी, देन यू विल बी इन ट्रबल. उससे बेटर है कोई काम करिए ही मत. घर में आराम से बैठिए, मूंगफली खाइए, सो जाइए, कुछ काम मत करिए. अगर काम करना है तो अभी तरीके से करना पड़ेगा. अभी सरकारें चाहती है कि आप प्रॉपर तरीके से काम करें, और अगर रिक्वायरमेंट है, ये ऑब्लिगेशन है, तो आपको ये करना ही पड़ेगा. ड्यू डिलिजेंस के साथ आपको काम करना ही चाहिए, और करना है अपनी फेवर के लिए भी और पब्लिक सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि ये इकोसिस्टम आपसे जुड़ा हुआ है. और आप इकोसिस्टम में अगर कोई चीज गलत इनपुट करते हैं, पूरे इकोसिस्टम के लिए गलत होता है. तो ये आपको नॉलेज लेनी चाहिए. ये आपका अपना प्रोफेशन है, आपके लिए है. और बेसिस ऑफ वैल्यूएशन हमने, आपको याद होगा, 50 आवर्स एजुकेशन प्रोग्राम का भी पार्ट था, वहां पर भी आपको एक गाइड किया गया था. यस सर, ओवर टू यू. So basically, whenever you are doing valuation, you have to check whether you are calculating fair market value, liquidation value, realizable value. So based upon that, you have to do your work accordingly. So that is basis of valuation. Means whether you are doing it for fair market value, whether you are doing it for realizable value or liquidation value. So there are two things. One is basis, then it's premise. We will discuss in the next topic. So what are these things? No. हमने कोशिश की है आपके लिए will make फॉर्मेट you बनाने के लिए, और फॉर्मेट में ड्रॉप डाउन ऑप्शन है कि आप उसमें से कैसे चूज कर सकते हैं, सो दैट कि आपकी तरफ से गलती ना हो सके. वो अगले पार्ट में हम देखते हैं. अभी पहले ये सेशन, ये टॉपिक पूरा कर लेते हैं, देन इट विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री सेशन फॉर ऑल फॉर दिस वैल्यूएशन फॉर्मेट के ऊपर. हमारी कोशिश है उसमें आपको सारी जानकारी दे दी जाए, तो काफी आपकी नॉलेज में अपडेशन हो जाएगी. यस सर, ओवर टू यू.
So next is continuing education obligation, CEP, what you are doing. So as technology evolves, values must maintain competence through ongoing professional development. Understanding AI, data analytics, and emerging tools is now essential to the professional practice. So here in this presentation, we are just touching the basic things of AI, data analytics, and emerging tools. But you know, these days, these are essentials to the private professional practice. So you must make yourself conversant with these things, AI, how it is helping you, data, what is data analytics, and how it is helping you, and what are the emerging tools which are essential for your professional practice. So, what are the key takeaways, what we have learned so far? We learned strategic integration. So AI and big data analytics are powerful tools that enhance valuation accuracy and efficiency. But they augment rather than replace professional judgment and market expertise. So they cannot replace professional judgment and market expertise. Next is risk and security. So robust cybersecurity protocols, confidentiality safeguards, and digital evidence management are fundamental professional obligations in technology era. You have to maintain robust cybersecurity protocols. You have to maintain confidentiality safeguards. And you have to maintain digital evidence management because these are fundamental obligations in today's technological era. These are new things which many of us are, though maybe conversant with, are not using, but they are essential in today's technological era. Then professional responsibility. So valuer remains fully accountable for conclusions reached using digital tools. Transparency, independence, and ethical standards must govern all technology adoption decisions. So whatever method, whatever technology you have used, you remain fully accountable for the decisions, for the conclusions you have used, even by using digital tools. Then regulatory compliance. All digital valuation approaches must conform to IBBI regulations and international standards. Technology does not create assumptions from professional requirements. Then continuous learning. The rapid pace of technological change demands ongoing professional development. Valuers must invest in understanding emerging tools while maintaining core professional competencies. So, the future of valuation lies in the intelligent integration of human expertise with technological capability.
maintaining professional standards while embracing innovation. So these are the things which so far we have learned as far as IBBI and other valuations are concerned. So certain things we should discuss. First thing is, will AI replace appraisers? So many of us have these doubts that in the coming times AI will replace valuers, appraisers. So this is not so. AI is unlikely to replace skilled appraisers. Remember. However, it is most probable that property valuations AI will be used as a tool to support the appraiser's work and streamline repetitive tasks. Many times you have to do repetitive tasks and many complex situations. They can help you in these things. AI for property valuations provide data-driven insights and speeds up labor-intensive aspects of the appraisal. While human appraisers will interpret data, considering unique property features and making financial decisions. So final decisions has to be made by the humans. So it is not that AI is unlikely to replace skilled appraiser as of now. आज की डेट में ऐसा नहीं है, but maybe very soon. So until now, what happens is whatever digital data, whatever digital tool is available, they are working on the commands given by you. But very soon, certain other new technologies are being introduced which may not require your commands, your inputs. So be prepared because technology is changing very rapidly. Whatever you do in today's scenario, that is not up to you. The world is knowing what you are doing. आपका मोबाइल है, आप कोई भी देख सकता है आप कहाँ पे हो, आपकी लोकेशन, आप क्या कर रहे हो. So next is, what does AI really mean for appraisers? So for us, what this does AI really means for us? Using AI in real estate appraisals signifies a shift towards enhanced efficiency, accuracy, and data-driven decision making. So what it can do for us is that it can enhance our efficiency, it can enhance the accuracy of the work done by us, and with the help of AI, we can have data-driven decision making. For appraisers, AI can streamline the appraisal process by automating tasks such as data collection analysis. With the help of AI, you can collect the data, you can analyze the data, and you can generate the report, enabling appraisers to focus more on value-added activities that requires human judgment and expertise. Means with the help of digital tools, you can do
data collection, you can do analysis of data, you can, of course, you can generate the report. So the times you save from these things, you can utilize that times, you can focus more on value-added activities that require human judgment and expertise. Moreover, AI solutions can act as a valuable real estate appraisers tools for providing comprehensive real-time market data and predictive analytics to make informed and up-to-date property assessments. Overall, AI helps appraisers develop more precise, transparent, and timely valuations, enhancing their capabilities with the real estate industry. This is what real AI really mean for us. Then how AI is used in property valuation? We have already discussed. Artificial intelligence is used in property valuations to collect data from diverse sources and analyze that data quickly. Two things are there. So what you cannot do manually, basically, if you, with the help of AI tools, with the help of digital tools, with the help of AVM, you can collect the data from diverse sources, from a number of sources. And of course, the data you have collected, you can analyze it with AI tools, and that too within a least possible time. Second thing, what you can do with the help of AI is that you can identify patterns and trends in the extensive data sets, which you cannot do manually. First thing is you can collect the data, and second thing is you can analyze that data. Third thing is you can identify patterns and trends in this extensive data, which you cannot easily do with manually. So these things offer real-time market conditions quickly, and these things will make you conversant with the market insights and will lead to precise property assessment. AI appraisal softwares empowers appraisers to create adaptable valuation models, significantly enhancing valuation efficiency and accuracy. Means these things will lead to enhancement in valuation efficiency, valuation of your work, enhancement of your efficiency, and of course will provide more accurate work. And what is AI for land valuation especially? See here what we can do with this, with AI. AI in valuation of land is used to assess price of land by analyzing various data points such as location, size, zoning, market trends, and comparable sales, which can be easily and accurately done by AI by using a larger databases which are not available to us manually and which we cannot do easily manually. Of course we can do, but it will take a lot of time. So locational data based upon the size of the land, zoning in which this property falls, market trends, and comparable sales. These are important things.
So valuation AI employs machine learning algorithms to process large data sets, identify patterns, and make predictions about land value with greater accuracy and efficiency than the traditional method of land valuation. So, what we have learned so far is what is the differences between manual property valuation and AI property valuation. Manual property valuation process is slow and long lasting, while AI property valuation methods are fast and automatic. Then manual property valuation requires human presence. You have to be present for each and every process at each and every step, from data collection to site visit to other things. It requires human presence. But with AI property valuation, almost all things are done by technology. And the main thing is that when you do valuation, it may be biased. You can do anything. You can enhance, you can reduce the value. You may skip certain points, or you may add certain points which may lead to bias. But AI valuation, property valuation will always be objective. There are less chances of bias in AI property valuation. Then in manual property valuation, complex paperwork is done manually. But in AI property valuation, automated reports are generated. And this manually property valuation, it is a effort consuming market and sales analysis. So when you are doing a market and sales analysis, it will consume a lot of time, lot of effort. But AI property valuation method, it will be AI powered analysis of data which will be done accurately and within a least possible time. And then these manually property valuations are non-standard. And AVM models, they are standardized for each and every type of valuation. And in property valuation, you can take only into account unique features. But AI property valuation, they disregards unique property features. So now we will discuss about the data sources. So main thing is the data. So far we are not using AI tools, but when you are doing valuation, you require data. So as a valuer, you must know the sources from where you can collect the data you which you may use in your valuation process. So first we will discuss about the data sources for land and building valuers. First thing is these are the data sources which you might use. What are the key data they provide? How they, after how much time they are updated,
So where it covers geographical coverage, so whether it is paid or free, and for whom these can be used. This is very important. First is lies for us source. From here you can collect the data regarding sales, launches, unsold stocks, prices, project or micro level. But this is a very important slide. आपको डाटा कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या उसके सोर्सेज हैं, क्या क्या उसके चार्जेस हैं, कुछ फ्री हैं, कैसे है, कौन सी साइट है, ये आप यहाँ से आप इसको, ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ये आपके लिए ही अवेलेबल कराई गई है. आई विल ट्राई टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल आल्सो as soon as I will get the permission of the governing board. But till now, as of now, you should understand the things which are being discussed by Dr. Rajvinder sir, कि कहाँ से ये डाटा आपको मिल सकता है और कैसे कैसे आप ले सकते हैं और क्या क्या रिलायबिलिटी है इन सोर्सेज में. यस सर, ओवर टू यू. So it is updated quarterly. After every 3 months, it has data of 60 cities, 60 plus cities, metros plus tier 2 cities. It is paid and it is ideal for developers, banks, institutional analysis. Next is prop equity, from where you can collect the data regarding project level data, inventory, price trends, forecast, etc. It is updated monthly and quarterly, and quarterly, and it has a data of 44 cities, metros and tier 1 and tier 2 cities. It is also paid. It is used by PE funds, consultants, feasibilities and analysis. Then NRO research, which provides you data regarding sales volume, new launches, price movement, inventory, etc. It is updated quarterly and annually. It is providing data for top 7 cities. It is free. It is bloggers, real estate investors, news media, etc. It is important. Then Knight Frank India. It provides you data regarding sales, supply, price trends, office leasing, etc. It is updated semi-annually. It provides data for top 8 cities. It is also free. You can use this data for corporate strategy, CERE reports, or market trends. Then proptiger-housing.com. It provides data for city level sales, price trends, unsold inventory. It is updated quarterly. It is available for top 8 cities. It is also free. It is useful for developers, investors, and users sentiment tracking. Then Magic Brick Prop Index. It provides data regarding asking price trends, rental index, demand, heat maps. It is updated quarterly. 13 cities with the locality details are also given in this. It is free of cost and it is important for bloggers, buyers, demands, settlements, trends. And then 99 acres insight. It provides data regarding sales, rent trends, new listings, micro market performance. It is updated quarterly. And top metro cities and selected tier 2 cities data is available. It is also free and city level price analysis, investment tracking. Then NHB Residex. This is official site of Government of India. It is official housing price index HPI. So you can get this HPI official housing price index which is provided by the government. It is
updated quarterly. It provides data for 50 plus cities, including Tier 2 and Tier 3 cities. It is free of cost. It is important for policymakers, researchers, long-term trend analysis. Then RERA portals. You know RERA Act. For RERA Act, each and every new project or project which are ongoing projects, each and every data has to be uploaded on the RERA website. So you can collect the data from RERA website of your state, which will give you project details, registration, completion status of different projects. It is updated real time or quarterly basis. So this is important because it is available state-wise. For example, Maharashtra RERA, UP RERA, Punjab RERA are of for different states and cities. It is free of cost. It is for due diligence, supply side verification, etc. So of course, you can collect the data from any of these sources. Next is data sources for plant and machinery valuers. So plant and machinery valuers in India utilize a combination of primary client data, market-based pricing platforms, and regulatory guidelines to determine asset values. First is you can collect as a plant and valued plant and machinery values. You can collect the data from the first collect specific asset information directly from the client to establish a baseline for the valuation. First thing, you collect the data from the client. For that, you have to check the original record, such as purchase invoices, original cost with the breakup, and the year of purchase. Next is the technical specification, manufacturer's name, model, serial number, capacity, manufacturing process flow diagram. Then maintenance data from the service records and interviews with the plant engineers or operators to assess the physical and working conditions. And then financial records such as income tax returns or for historical investment data, especially for MSME classifications. So first thing, there are certain data which as a plant and machinery you can collect from the client itself. Then for market-based pricing, you can contact market-based pricing sources. For current replacement or resale values must refer to active industrial marketplaces, online business to business B2B portals. For platforms like IndiaMart, TradeLine, Trade India, and Azo.com, they provide current market rates for new and used industrial machinery. Then there are certain specialized used machinery platforms such as Rouse Machines, MachineSales.in, and Machinery.com. These serve as references for secondary market transactions. Then, of course, the price books and catalogs of the companies. So the professional references such as Espons Mechanical and Electric Services Price Book 2025 you can refer to. They provide updated pricing for budgeting and replacement costs. Then for machinery auctions, you can from where you can get realized prices for industrial auctions, offer insight into current and liquidation values of the machinery.
Then from regulatory and institutional framework, so valuers must follow standardized procedures and guidelines by recognized Indian bodies. IBBI publish official valuation standards and examine syllabus that outline mandatory procedures for registered values. CEF, IEF review they provide handbook on best practices for registered values and technical guides on valuation methodologies. Custom data from the Central Board of Direct Indirect Taxes and Customs, they provide data on import cost and exchange rates, which are critical for valuing imported machinery. Then from government surveys, the annual survey of India by the Ministry of Statistics provides macro level industrial growth and output data. Then you can refer to technical reference materials such as valuation guides, updated textbooks such as Guide to Valuation Examination 2025. Original equipment manufacturer's website, you can refer to direct verification of current model prices and technological specifications. So this is all about this topic. So we can discuss anything you want. Thank you. So, friends, before we move to the next topic, the bonus topic for today's session is this format of valuation, standardized format of valuation. IBBA proposes standardized asset valuation format to promote consistency, transparency, and standardization of valuation carried out under the code. Before we move to that topic, if you are having any doubt or query related to this session, please unmute yourself and ask your question. Sir, good morning, Sandeep ji. Yeah, good morning, Sorry. sir. Sorry, so good afternoon. Sir, the data sources which we have, which were shared in the screen, just need one clarification. As per IVSC, I think these are called as market observable data. So they can be used for secondary sources. So just needed one clarification on this topic, sir. Sir, you can use these sources for your valuations if the data is required regarding the prices or other things. Of course, these data you have to collaborate your data with your requirement. You cannot use the data getting from these sites as it is. You have to verify data from the sources. These are just a guidelines which you will get from these sources, which may or may not be helpful in your valuation for a particular valuation, but they may be helpful for making certain basis पूरी from तरह it. रिलायबल आप नहीं मान सकते इन साइट्स को, आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, लेकिन आपको एक गाइडलाइन मिल जाती है कि कितना रेंज होना चाहिए। जैसे किसी भी वेबसाइट पर है तो वो देखिए वहां पर सेल परचेज का डाटा होगा, तो जो सेलर होगा वो चाहेगा मुझे मैक्सिमम अमाउंट मिल जाए, जो परचेजर होगा वो चाहेगा मुझे कम से कम में रेंटल प्रॉपर्टी या परचेज प्रॉपर्टी के लिए मुझे मिले। तो आपको वो कोरिलेट करना पड़ेगा एक्चुअल सिचुएशन के साथ। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ एक गाइडलाइन मिल सकती है कि आप कहाँ तक, क्या आपकी रेंज होगी। जैसा आपको फर्स्ट सेशन में बताया, एक अप्रोच, आपको मार्केट अप्रोच के लिए आपको एक रेंज चाहिए होती है, किस रेंज में आपका डाटा फॉल करना चाहिए, या आपकी वैल्यू फॉल करनी चाहिए, आपका अमाउंट फॉल करना चाहिए, आपकी आउटपुट फॉल करनी चाहिए। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, कम से कम मैं यहां पर जा सकता हूं, मैक्सिमम मैं यहां पर जा सकता हूं। लेकिन एक्चुअल जानने के लिए आपको पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी, लोकल कंडीशंस ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी और काफी कुछ। दूसरा, कभी कभी क्या होता है,
आपको ऑनलाइन सर्च करने से आपको नेगेटिव इफेक्ट पता चल जाते हैं, इस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या नेगेटिव इफेक्ट है, वहां पर जो रिव्यूज होते हैं या कुछ चीजें होती हैं, उसको आप एनालाइज करके अपने रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवर टू यू सर। जी सर, थैंक यू। Thank you, सर। नो, सो एक्चुअली रिसेंटली हमारा वैल्यूअर्स के ऊपर थोड़ा आईबीबीआई ने एक्शन लिया है, बिकॉज वैल्यूअर रिलाइड ओनली अपॉन दिस मार्केट ऑब्जर्वेबल डेटा एंड ही डिडंट I mean, inquire with the local persons or any kind of data he didn't mention in the valuation report, and IBI has Sir, seen. this is what I have done. Thus, Sandeep ji, and I have told you that verification point part lies with you. It is your duty to verify the data. Yes, sir. Yes, sir. Just It is through not this that you platform. got the data and you used that data and you are absolved of your responsibility, that you can say that I have taken the data from this source. That is not the end. You Yes, collect the sir. data from n number of sources. You have to see here, sir. It is your duty to collect the data. One thing. Second thing is you have to make that data useful. You have to add certain things. You have to remove certain things. So you देखिए, have to डाटा make the लेना ही data एक आपकी workable. रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। वो डाटा सही है या नहीं है, वो आपकी मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर है। और देखिए, साइन आपके होने हैं। अल्टीमेटली यू विल बी द सफरर और गेनर। तो साइन आपके होने हैं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। देखिए, आपको एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी आपको लाइसेंस प्रोवाइड, इन शॉर्ट में आपको बताता हूँ एक वेग सा एग्जांपल। गाड़ी आप चला रहे हैं, आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर देगी आपकी कैलिबर देखकर। जो गाड़ी है वो आपको एक्सीलेटर, क्लच और बढ़िया से बढ़िया चीजें, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देगी। लेकिन गाड़ी तो आपको चलानी है ना भाई। अगर आप ब्रेक नहीं टाइम पे मारोगे, ब्रेक टाइम पे, एक्सीलेटर नहीं दबाओगे, टाइम पे स्पीड नहीं दोगे, टाइम पे क्लच नहीं चेंज करोगे, तो गाड़ी तो ठुकेगी ठुकेगी। और जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप 150 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हो, बोल रहे भाई ये तो गाड़ी वाले की, जिसने गाड़ी बनाया उसकी गलती है, मैंने तो वहां से बोला था, वो बोलता है 200 की स्पीड पर जा सकती है, मैं तो 200 की स्पीड पर चलाऊंगा। और सामने से दूसरी गाड़ी आ रहा है और आपने ब्रेक नहीं मारी या स्टेयरिंग को टर्न नहीं किया, स्टेयरिंग इज इन योर हैंड, तो इट इज योर प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक। गाड़ी आपने चलानी है, जिंदगी आपकी है, सफर आपने करना है। और साइन यहाँ पर, इन यहाँ पर क्या है कि साइन आपके होंगे। ठीक है, मैजिक ब्रिक्स डॉट कॉम या दूसरा कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कोई भी वेबसाइट आपको साइन नहीं करके देने वाली आपकी रिपोर्ट के ऊपर। रिपोर्ट आपने देनी है, तो यू विल बी द सफरर। तो आपको उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी फाइनल जो कैलकुलेशन है वो चेक करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो अभी हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा कोई Sir, डाउट है तो पूछिए। यस सर, sir, मिस्टर राजेश अग्रवाल। Yeah, good afternoon, Thank sir. you, Sandeep ji. Thank you. या थैंक यू सर। Yeah, good afternoon, sir. Sir, actually, I have two questions, sir. एक जो क्वेश्चन है सर, आपने जो बोला सर, ये अपन सॉफ्टवेयर यूज़ ना करें करके सर। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ ई वैल्यू का, तो उसमें सारे अपने वैल्यूएशन सर उसमें स्टोर हो रहा है सर उसमें। तो आपका सजेशन क्या रहेगा सर, मैं उसको मतलब ना करूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा? बिल्कुल मत करिए सर। देखिए, मेरा पर्सनल सजेशन है, इट कैन नॉट बी टू द पब्लिक ऑल्सो। मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि आप अगर पब्लिक आपका डाटा अगर वो उनके सॉफ्टवेयर पे स्टोर हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी रिस्की ऑन योर बिहाफ। तो कभी भी वो डाटा उसको इस्तेमाल करेंगे, क्यों क्यों उनके प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ डिस्कशन। तो आपको अगर आपका डाटा है तो आपके पास होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। आपके किसी एम्प्लॉय के पास भी नहीं होना चाहिए, आपके किसी फैमिली मेंबर के पास भी नहीं होना चाहिए। तो उनके पास जा रहा है तो बहुत बड़ा रिस्क है। अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा है तो सबसे पहले उसको स्टोर करिए अपने कंप्यूटर पे और उसको डिलीट करिए वहां से, सो चाहे वो दैट बैंक वैल्यूएशन। इन फ्यूचर कभी वो यूज ना कर सके। देखिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि सभी लोग ऐसा करते हैं, सभी लोग ऐसा इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ऐसा देखने में आया है कि एक पर्टिकुलर सिटी का डाटा पहले नए नए वैल्यूअर्स को बोलते हैं भाई आप यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर आप फीड करिए, फ्री में आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट मिलेगी। वो डाटा फीड करना शुरू कर देते हैं, बाद में वही डाटा किसी भी साइट को वो भेज देते हैं कि इस जगह पर इतनी वैल्यू, इस जगह पर इतनी वैल्यू, इस जगह पर इतनी इतनी वैल्यू, किसी इस जगह पर ये प्रॉब्लम है, इस जगह पर ये प्रॉब्लम है। तो वो आपका डाटा इस्तेमाल करके वहां देते हैं। और बाय द वे, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अनफॉर्चुनेटली लीक हो गया, आपने नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, लेकिन फिर भी लीक हो गया, और उसकी वजह से किसी को ये लिटिगेशन में चला गया, ऑलरेडी लिटिगेशन में केस है, और वो इंफॉर्मेशन वहां पर इस्तेमाल हो गई उसके अगेंस्ट या उसके फेवर में, तो वो अल्टीमेटली क्योंकि आपके आईपी एड्रेस से शेयर हुआ है,
तो प्राइम वो हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी बेचेंगे, आपकी बनेगी और आप ही जिम्मेदार बनेंगे उसमें। वो हमें ही बेचेंगे डाटा। तो थैंक यू। माय सेकंड क्वेश्चन इज सर, इसमें सर एक अपना जैसे छत्तीसगढ़ में एक्चुअली गवर्नमेंट गाइडलाइन और एक्चुअल मार्केट रेट में काफ़ी गैप है सर। जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइन 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, तो एक्चुअल मार्केट रेट 5000 पर स्क्वायर फीट है सर। तो हम लोग को यहाँ पे जैसे वैल्यूएशन देना रहता है सर, तो एविडेंस 1000 का मिलता है, बट पार्टियां या फिर बैंक वाले भी ये चाहते हैं कि आप एक्चुअल वैल्यू दीजिए करके। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अपने को क्या करना चाहिए सर? हमको जैसे इंडेमनिटी बॉन्ड भी साइन करने के लिए बोलते हैं सर वो, तो इसमें आपका क्या राय रहेगा सर? देखिए, अगर अगर हमें वो डाटा वहीं से उठाकर ही करना है, जो गवर्नमेंट रेट्स हैं, जो एविडेंसेस हैं, फिर तो आपकी और मेरी जरूरत ही नहीं है। फिर तो तहसीलदार या तहसील में एक जो रजिस्टर्ड रजिस्ट्री लिखता है अर्जी नवीस, वो ही वैल्यूअर बन जाएगा। मेरी और आपकी क्या जरूरत है? आप देखिए, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच और कॉस्ट अप्रोच, तीनों को आपको लगाकर डाटा एनालाइज करना है। और आपको मार्केट अप्रोच के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं वो आपको इस्तेमाल करने हैं। जैसे अभी सर ने कुछ बताया, बाकी आप अगर अगर आपके पास टाइम हो तो आप देखिए, मार्केट अप्रोच के ऊपर 2-3 वीडियोस हैं, डिटेल में दिया गया। अब इट इज नॉट पॉसिबल कि यहाँ पर शॉर्ट टाइम में मैं आपको पूरा डिटेल बता दूं। काफी अप्रोचेस मार्केट अप्रोच के अंदर, काफी आप मार्केट अप्रोच की ही बात कर रहे हैं, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। यस क्योंकि लैंड के रेट अगर निकालने हैं तो मार्केट अप्रोच से ही निकलेंगे। यस तो अगर मार्केट अप्रोच से आप कर रहे हैं तो उसके 3-4 मेथड्स हैं, वो कैसे कैसे क्या क्या है वो डिटेल में आपको एक वीडियो में दिया गया है, पूरा विद एग्जांपल दिया गया है। कोशिश करिए वो वीडियो देखने का। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, प्लीज रिंग मी, और डॉक्टर राजेंद्र सर को आप रिंग कर सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिना टेक्निकल एनालिसिस किए, बिना उसका रिकॉर्ड ऑन पेपर लाए आप सबमिट मत करिए। देखिए, कहीं पर ऐसा हो सकता है कि जो गाइडलाइन रेट्स है उससे काफी ज्यादा, 2 और 3 टाइम्स वैल्यू होगी। कहीं पर ऐसा भी हो सकता है जो गाइडलाइन रेट्स हैं उससे 50% वैल्यू हो, यस सर क्योंकि उनका तो सिर्फ रिवेन्यू पर्पज है। गाइडलाइन रेट्स मेरे और आपके लिए नहीं बनाए गए हैं। यस सर वो गवर्नमेंट ने सारी मेहनत की है अपने फायदे के लिए, अपने रिवेन्यू का फायदा नहीं कह सकते, इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, मतलब अपने पर्पज के लिए, रिवेन्यू पर्पज के लिए। तो वो ये नहीं बोलेंगे कि राजेश जी ने वैल्यू करनी है, मैं सही यहां पर इतना इतना रेट होगा इतना ही दूं। नो, उनका पर्पज है रिवेन्यू कलेक्ट करना, और किस उनके देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स के वो उसको कैसे कंसिडर करते हैं। लेकिन एज अ वैल्यूअर यस उसमें क्या क्या रिस्क हो सकता है, क्या पहले क्या शुरू पॉजिटिव हुआ पॉइंट्स था। हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, वो सारा आप देखना आपका और मेरा जिम्मेदारी है। फिर तो उसमें वो एक ये आप उसको प्रॉब्लम। मार्केट अप्रोच में एक बार उसको स्टडी कर लीजिए। एक बार व्यू, 2-3 वीडियोस हैं वहां पर, एक कोर्स भी मार्केट अप्रोच के ऊपर पूरा एक कोर्स है 7 वीडियोस का। आप कोशिश करिए उनको, और वो टीवी पर भी लग जाएगा। आप स्मार्ट टीवी पर चाहेंगे, स्मार्ट टीवी पर लग जाएगा। थोड़ा कोई जैसे फिल्म देखते हैं ऐसा ही उसको कोशिश करिए देखने का, तो यस उससे काफी आपके डाउट क्लियर होंगे। मार्केट अप्रोच, कॉस्ट अप्रोच और इनकम अप्रोच, ये तीनों के वहां पर 3 कोर्सेज क्रिएट किए गए हैं। आप कोशिश करिए, उसमें 4-4, 5-5 वीडियोज हैं, सिलेक्टेड वीडियोज हैं और सिलेक्टेड केस स्टडीज हैं। तो उससे आपको पूरा डाउट क्लियर होने वाला है। थोड़ा सा टाइम इसमें इन्वेस्ट करिए तीनों अप्रोचेस के लिए, तो आपको देखने में आएगा कि आपका सारा का सारा जो आपकी मेमोरी है ना, पूरी रिज्यूनेट हो गई है। सब कुछ बदल गया है, दुनिया बदली बदली सी नजर आएगी, अच्छी अच्छी नजर आनी शुरू हो जाएगी, हर चीज ग्रीन ग्रीन नजर आएगी। सर इसमें एक ठीक बस है ये सर। है, जैसे थैंक यू Sir, सनी I जी। have सर, one question, sir. एक बात मैं और बता रहा हूं आपको कि देर इज ए वेबसाइट IBAPI। तो जितने भी IBAPI। इंडियन बैंक ऑक्शन मॉर्गेज प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन, जो भी प्रॉपर्टीज which were mortgaged with the banks and the banks are auctioning these properties, all the properties of all the cities, they are available on this site। सर इस IBAPI। किसी भी शहर के किसी भी सिटी का, किसी भी स्टेट में आपने देखना कि इस शहर में, कि मैं जलंधर में रहता हूँ, कि जलंधर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी बैंक्स ऑक्शन कर रहा है, तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर देयर, एंड दैट आर वेरी helpful for you. You can access that site, website, and can gather the information from that. That will be more helpful for you। ओके सर, कैन यू सर रिपीट द साइट साइट? का नाम फिर से कौन बता सी दीजिए। वेबसाइट है? IBAPI। IBACI। API, ACI। इंडियन बैंक्स ऑक्शन मॉर्गेज प्रॉपर्टीज इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जिस आप स्टेट का नाम भरो, डिस्ट्रिक्ट का नाम भरो, सिटी का नाम भरो, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज अलग अलग लोकेलिटीज में ऑक्शन, अलग अलग बैंक, सभी बैंक्स का वहां पे इंफॉर्मेशन होगी। नॉट इवन प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज, मशीनरीज,
commercial vehicles or other vehicle, everything is available on this website. सर आपने अभी Sir, बताया I कि have ये a question, sir. हेलो सर, बोल सकता हूँ? हाँ जी बोलिए सर। ना सर, सर रजविंदर सर, अभी आपने जो जी सर। सोर्सेज बताए मैजिक वाले और ये 99 एग्रा के, इनसे जो फ्री डाटा चाहिए वो ये प्रोवाइड नहीं करते सर। हाँ जी। जो अभी आपने बताया मैजिक का लें या 99 एकड़ का लें, इनसे जैसे हाँ हम जी लोगों को जो अभी आपने बताया कि फ्री डाटा अवेलेबल होता है किसी टाइम पीरियड के लिए। सर, वहां पे सिर्फ सर आपको आस्किंग प्राइस जो मिलेगा वो ही फ्री मिलेगा, बाकी कुछ करना है तो उन्होंने पेड है, तो यू आर मोस्टली रिक्वायर्ड विद द, देखिए, यू अगर आर अगर मोस्टली आपको प्रोफेशन डीलिंग में विद द काम करना है, आस्किंग कुछ प्राइस। कुछ डाटा चाहिए और कॉन्फिडेंशियल डाटा चाहिए, तो ऑलवेज बी रेडी टू पे द कंसिडरेबल अमाउंट। तो फ्री में तो ठीक। कोई भी कुछ नहीं देता, लेकिन फ्री में जो चीज डाटा अवेलेबल है वो उसका अगर आप आपसे आपका काम पर्पस सॉल्व हो जाता है, देन इट्स ओके, अदरवाइज डोंट हेसिटेट टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट। यस सर, ओवर टू अविनाश सर। सर गुड आफ्टरनून। सर एक छोटा सा अभी के सेशन से ही रिलेटेड एक सवाल था। कोई मॉडल का नाम सजेस्ट करेंगे सर, वैल्यूएशन मॉडल का? सर ये हम लोग 0 आवर में लेंगे अभी, क्योंकि ऑफिशियल ठीक। टाइम है, हम लोग इसमें ज्यादा सर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। कोई सर सर कोई ऐसा किसी थैंक को यू। रिकमेंडेशन हम यहाँ पर ऑफिशियली नहीं कर सकते। पर्सनली हम ठीक डिस्कस ठीक करेंगे 0 आवर में। ठीक ठीक ठीक। हम कोशिश करते हैं कि टाइमली ये सारा सेशन खत्म हो जाए, थोड़ा ही टाइम बचा है, तो मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा हम लोग पहले खत्म कर लेते हैं सर। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन 0 आवर। आई विल बी विद यू, वी विल ऑल बी विद यू। ओवर टू यू सर। सर एक यस मिनट, सर, मैं एक पहले जी। अगर आप अलाउ करें तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं, थोड़ा जी सा जी सर। जी बैकग्राउंड पता सर। चल जी जाएगा सभी को। जी सर। So, friends, I am going to share my screen. This was the news shared by CEV on its official news portal, cevnews.in. cevnews.in पर आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर आपको पहले ये YouTube के सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आप इसको लोड मोर करेंगे तो बाकी के वीडियोस आ जाएंगे। देन लेटेस्ट न्यूज में आप जाएंगे तो यहाँ पर लोड मोर करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। ये सबमिट करने का आपको सिस्टम बताया गया था, आपने कमेंट सबमिट करने का, लेकिन ये डेट निकल चुकी है, हम लोग इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 10th of December वाज द लास्ट डेट। लेकिन क्या इसका बैकग्राउंड है ये मैं आपको 2 मिनट के लिए डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करें सो दैट आपको पता चले हो क्या रहा है। देखिए, आईबीबीआई प्रपोजेज स्टैंडर्डाइज एसेट वैल्यूएशन फॉर्मेट। अभी तक कोई फॉर्मेट नहीं था, कोई भी किसी भी फॉर्मेट में रिपोर्ट दे सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन या एट द टाइम ऑफ कोई प्रॉब्लम आती है, या फिर एट द टाइम ऑफ जब वहां से कोई इंक्वायरी होती है, तो वो डाटा मांगते हैं और आप बोलते हैं मैंने तो इसमें दिया नहीं, या फिर वो बोलते हैं आपने इसमें क्यों नहीं दिया, बोलते हैं मुझे बताया नहीं गया था देने के लिए, तो मुझे समझ नहीं लगा जरूरी था या नहीं था। तो इसलिए उनकी तरफ से एफर्ट्स किया गया, बहुत ही एक वेलकम स्टेप है जो उनकी तरफ से लिया गया। हम लोग शुरू से ही इसके बारे में हम रिक्वेस्ट करते रहे हैं, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट होना चाहिए सो दैट कि गलती होने के बाद भी गलती ना हो सके, हमें पता हो कि क्या क्या हमें रिपोर्ट में देना है, सो दैट के कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्मिटी रहे सभी की रिपोर्ट्स में। और एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन, एट द टाइम ऑफ पीयर रिव्यू, एट द टाइम ऑफ आपकी HYR भरने के लिए ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट हो जाए। तो आईबीबीआई प्रपोजेज स्टैंडर्डाइज्ड एसेट वैल्यूएशन फॉर्मेट टू प्रमोट कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड स्टैंडर्डाइजेशन इन वैल्यूएशन कैरिड आउट अंडर द कोड। ये इनवाइट किया गया था आईबीबीआई की तरफ से। ये आपको एक न्यूज हमने आर्टिकल पब्लिश किया था, उसके अंदर ये सारा कुछ दिया गया है। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा होगा तो दोबारा से जाकर पढ़ लीजिए, बहुत नॉलेजेबल है और आपके ही काम का है और आगे भी काम आएगा। डिटेल इंफॉर्मेशन अपडेटेड बाय काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एंड वैल्यूअर्स, ये एक आर्टिकल सीईबी की तरफ से एफर्ट किया गया था आपको वो सारी जानकारी पहुंचाने का। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल आईबीबीआई रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, समरी आपको दी गई है। The Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) has proposed a standardized asset valuation format to reduce litigation and strengthen bankruptcy resolution under the Insolvency and IBC Code. The proposal invites public comments by December. ये already time निकल चुका है, तो अभी हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके IBBI refines valuation framework. The Insolvency and Bankruptcy Board of India has issued additional draft paper on valuation format, further refining the framework of valuation under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. The proposed guidelines aim to bring consistency, uniformity, and objectivity to the valuation
exercise, ensuring comprehensive, transparent, and well-defined valuation reports. This is the main purpose. This step is intended to enhance confidence among creditors, educate authorities, and improve the quality, credibility, and reliability of valuation outcome in India insolvency system. पूरे इकोसिस्टम के लिए ये बहुत फायदेमंद रहने वाला है. Uniform Valuation Report Proposal. The IBBI has released a proposal for the Uniform Valuation Report format to enhance credibility litigation and reduce litigation under the insolvency IBC code. The new draft open a public comment until December 10th, aims to address concerns about varying valuation reports and frequent legal challenges. The initiative follows years of stakeholder concerns. As I already told, we are already requesting this thing since long. Concerns regarding consistencies in valuation documentation and methodologies. Okay. The CEV is conducting a consultation exercise inviting the registered valuers, stakeholders, and professionals to provide feedback on draft guidelines and valuation under the IBC code. ये already time निकल चुका है, लेकिन ये क्या-क्या इसके फायदे होंगे? The IBBI has released the additional draft paper on valuation format under the IBC and invited public comments. This initiative aims to strengthen the valuation ecosystem by standardizing the valuation report formats, ensuring uniformity in documentation, enhancing transparency and credibility to the IBC process, reducing disputes in valuation outcome. This is the most important point. एक्शन क्या चाहिए था आपको? ये ऑलरेडी क्योंकि डेट निकल चुकी है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये पूरी गाइडलाइंस आपको रिलीज की गई थी सीवी की तरफ से, लेकिन अब टाइम निकल चुका है तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे. डिटेल वीडियो भी यहाँ पर डाला गया है, आप चाहे तो वीडियो भी व्यू कर सकते हैं अगर आपको कोई इसमें डाउट है. पूरी यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक लिटरेचर डाला गया, पूरा आर्टिकल बनाकर डाला गया आपकी फेवर के लिए, आपको इसके बारे में जानकारी देने के लिए क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है. आपको पूरा जो सर्कुलर है, डिस्कशन पेपर है, वो यहां से आपको मिल जाएगा. आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक हियर का बटन यहां पर दिया गया है. आप जैसे इसको क्लिक करेंगे ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आपको 19 नवंबर 2025 को बोर्ड की तरफ से, अथॉरिटी की तरफ से जारी किया गया है. इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी. इसमें देखिए सबसे बड़ी क्या बात है, ये देखिए गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग वैल्यूएशन अंडर द आईबीसी कोड. ये आप पूरा रीड करिए. इसके बाद में जो आप ये एक एक पॉइंट आपके लिए जरूरी है. मिनिमम कंटेंट ऑफ द वैल्यूएशन रिपोर्ट, क्या क्या मिनिमम होना चाहिए. अब ये अभी तक ये आप जो मर्जी दे रहे थे सब एक्सेप्ट हो रहा था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं चलने वाला. आपको ये मिनिमम कंटेंट आपको रखना ही पड़ेगा. और की पैरामीटर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल वैल्यूइंग रिसीवेबल्स. उसके बाद में यहां पर उन्होंने ये आपको अलग अलग फॉर्मेट दे दिए. स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉर वैल्यूएशन, ये आपको पहले लैंड एंड बिल्डिंग का क्या क्या कंटेंट आपका होना चाहिए, इसके बेस पर आप अगर अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट का फॉर्मेट बना लेंगे तो आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है. ये पूरा लैंड एंड बिल्डिंग के लिए है. इसके बाद में कंटिन्यू हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी के लिए. ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी के लिए बहुत ट्रिमेंडस एफर्ट्स किए गए हैं अथॉरिटी की तरफ से, बहुत मेहनत की गई है आपकी और मेरे लिए. इसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसमें छोड़ी गई है. हर चीज आपके फायदे के लिए लिखी गई है. और क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है वो भी बचाने के लिए, आपकी फेवर के लिए किया गया. एसएफए के लिए यहां पर आ गया है. ये एसएफए के लिए है. ट्रिमेंडस एफर्ट्स किए गए हैं अथॉरिटी की तरफ से. ये आप जरूर पढ़ें और थोड़ा टाइम दें इसके लिए. यही हमारा कैरियर है, यही हमारी रोजी रोटी है, तो इसके बारे में जानकारी मिलना आपको बहुत जरूरी है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है तो पूछिए यहां तक आने के लिए, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद द सेशन. cvnews.in में जाएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे, आपको ये मिल जाएगा. अगर कहीं भी कुछ नहीं मिलता तो सिर्फ आप इसके पहले 3 वर्ड्स याद रख लीजिए. IBBI प्रपोजेड स्टैंडर्डाइज्ड एसेट वैल्यूएशन. अगर ये आपको यहां पर पता है तो आप सीधा यहां पर जाइए, नीचे यहां पर IBBI टाइप करिए, PROP, बस इतना लिख दीजिए और यहां पर सर्च का बटन दबा दीजिए. कुछ भी आपको ढूंढना है यहां पर आप सर्च बटन दबाइए, आपको सीधा का सीधा ये आपको मिलने वाला है. ये देखिए IBBI से रिलेटेड जितने भी
आर्टिकल्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सिर्फ एक सर्च इंजन इस्तेमाल करें। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, ड्राइविंग तो आपने ही करनी है, ड्राइविंग सीट पर आपको बैठना है, तो ढूंढना भी आपको ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट आपका है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Now we will move to the next important class, that is the bonus of for today's session. Over to you, sir. Please continue. Thank you, Sandeep ji. So as Sandeep ji have told you that IBB has given certain formats. So basically, in these formats, these are the minimum things which, as a valuer, you have to give in your valuation report, especially for IBBI valuations, which are to be done under Companies Act 2017. So we will discuss about the things which have been given in the valuation format for land and building. For other values, you can contact the things. These details have been given to you by Sandeep ji. So we will be discussing about the asset specific format for the valuation for land and building. So first of all, you have to give the executive summary of the valuation report. At the start, you have to give the executive summary of the valuation report. Then first thing you have to mention is appointing agency or client who has appointed you to do the valuation. The name of the client or the appointing agency, registration, if some work has been allotted to you by the insolvency professional, which is acting as interim resolution professional, you have to mention his name, his number, as the case may be, or it has been given to you by liquidator, what our client or the IRP, you have to give his name, his registration number, if any. Friends, Then you have for sampling purpose, we are discussing only about the land and building. Almost सभी का फर्स्ट परफॉर्मा सेम ही है। बाकी आगे का जो अलग अलग एसेट क्लास के अलग अलग हैं। फॉर टाइम रेस्ट्रिक्शंस वी आर डिस्कसिंग ओनली एज अ सैंपल, वी आर डिस्कसिंग ओनली फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। लेकिन आप उसको अपने कस्टमाइज आप कर सकते हैं। बाकी का जो एसेट क्लास, एसेट वाइज जो परफॉर्मा है, आप उसको स्टडी करके एसेट वाइज कर सकते, अपने कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ऑलमोस्ट जो पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट सभी में सेम है। तो इसलिए हम लोग फॉर द टाइम बिंग लैंड एंड बिल्डिंग का कर रहे हैं। आगे अगले सेशन में हम लोग प्लांट एंड मशीनरी और एसएफए का भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। यस सर, ओवर टू यू। So in the next, you have to give the details about the company details, CD name, including business profile of the company, CINL, LLP number of the company, address of the registered office, and principal office, if any, and date of incorporation of the company. The next is purpose of valuation. See here, this purpose is not the same as the basis of valuation. So then class of asset, land and building, plant and machinery, whatever the class of asset is. Subject asset class, then brief description about land and building, project name, location, etc. You have to give that. Then scope of work. So here you have to give the details of the assets of which you have to do the valuation. That is scope of work. Here you have to give the details of the assets which are to be valued by you, which are mentioned in your appointing letter, which must be. And then insolvency commencement date, liquidation commencement date, as the case may be. Then valuation date. See here, there are three things. One thing is valuation date, second thing is inspection date, and third thing is report date. You have to mention these things separately. So maybe that report date is 21st December, but the valuation date may or may not be 21st December.
as in the case of when you are doing valuation for CBTT for capital gain purposes, valuation date is 1st April 2001. Similarly, here the case may be that you may have to do the valuation for certain other date than the date of report. So the report date and the valuation date may or may not be same. Then you have to give fair valuation and liquidation value. Then details of the registered value, it may be registered value or RVE, as the case may be registered value entity. You have to give its registration number, date of appointment, on which date you have been appointed as a valuer. Then the status of CAP as on appointment date, certificate of practice. See here. देखिए अभी ये मस्ट होने वाला है, डेट ऑफ सीओपी आपको यहाँ पर एंटर करनी पड़ेगी। अगर आपके पास वैलिड सीओपी है तभी आप इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। अगर वैलिड सीओपी आपके पास नहीं है देन यू विल नॉट बी अलाउड टू प्रोसीड फर्दर। Then you know, you for doing valuation under Corporate Companies Act, you have to generate VRIN number from the website of the authority, and this VRIN number has to be mentioned on each and every page of your report. Then you have to give the purpose of and scope of work. Purpose of this, as the case may be, purpose of this valuation is to estimate the fair value and or liquidation value of the subject land and building assets as required under the Insolvency Bankruptcy Code 2016 and the rules and regulations made thereunder. The scope of the work as agreed upon in the engagement appointment letter for intent and the purpose of assignment has to be elaborated here. Then details of any other experts, if you have taken the help of some environmental expert, structural expert, or any other expert, then you have to give his या देखिए पॉइंट details. नंबर 28 सर, 27 एक मिनट 28 दिखाइए सर। द डिटेल्स ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर, यहाँ पर आप देखिए लास्ट इसमें लिखा है द VRIN शैल बी मेंशन्ड इन द फुटर ऑफ द ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ ईच पेज ऑफ द रिपोर्ट। ये आपको फॉलो करना है। अब ये नई इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, आपको ये फॉलो करना है। ऑन द लेफ्ट साइड VRIN आपके रिपोर्ट के हर पेज के ऊपर लेफ्ट साइड में होना चाहिए। पहले आप कहीं भी लिख सकते थे, लेकिन अभी ये उनके क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, लेफ्ट साइड में होना चाहिए, फुटर में, वो भी फुटर में, हेडर में नहीं होना चाहिए। यस सर, ओवर टू यू। So details of other expert, provide the name, qualification, and role of any expert if and what whose input was used in the valuation report. Then disclosure of values, interest or conflict, if any. If you have any interest, or then you have to disclose it here. Disclosure of value should declare for personal, financial, or professional interest in the valuation or any conflict of interest with the client or stakeholder as the case may be as per the Companies Act 2017. Then the identity of the client, appointing authority, or another and other intended users who can use this your valuation report, whether the client or some other persons. You have to give the details here: intended users, clients, appointing authority, name and registration number of the insolvency professional. Everything you have to give the details here. Then intended use, or what use the valuation report will be used to determine the value as per the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Rules and regulations you have to give here. Then details of the assets and liability, you have to do valuation which is given to you in your
Appointing data details should include size, location, address where the land and buildings are situated, revenue, survey, property, circle rate, geographical of the location, name of the property owner, lessor, lessee, sublessee, assignee, legal title, status, status of lease as on valuation date if the property is leasehold, then the interest to be valued, for whom you are doing valuation, whether for the lessee or the for the lessor, possession, occupancy status, type and current use of assets, boundaries or cardinal directions, north, south, east, west, etc., and general descriptions of the assets, details of the land area, circle rate, success, topographic level, shape, frontage to depth ratio, visibility, and any other relevant information you want to give. Then you have to mention background and other information about the asset being valued, details of the bond, property ownership history, permissible use of the property, whether it can be used for residential, commercial, or industrial, encumbrances, if any, and relevant approvals, RERA, zoning development potential, and any other relevant information. Then valuation currencies and measurement. So whether you are doing giving the values in rupees or in any other currency, maybe dollar, pound, euro, etc. So currency used in the valuation should be clearly stated. In case currency other than Indian rupees is used, the explanation for the same should be provided. It is also necessary to mention the conversion rate between the two currencies and its source. The units of measurement of land and building should be mentioned. So in each and every state use measurement of units of measurement for land are different. Certain area it is used in square meter, square yard, acres, square feet, or any other units. You have to mention that. Then the source of information, from where you have taken the information, title documents, site inspection, municipal approvals, list of building and civil structures along with their respective built-up area, then approved building layout plans, market data from government records and real estate databases, discussion with the local brokers, expert reports, if any. You have to give it each and every detail. Then देखिए basis देखिए and जो कुछ promise हम of the पहले value adopted. सर एक मिनट सर, आई वांट टू ऐड समथिंग। देखिए जो कुछ हम पहले करते थे यहाँ पर उन्होंने एक ही पॉइंट में कवर कर दिया है। जितना हमारी पूरी रिपोर्ट में होता था यहाँ पर उन्होंने 35 और 36 में पूरा का पूरा कवर कर दिया। बाकी सारी चीजें उसके अलग हैं, और क्या क्या अलग है, क्या क्या हमें और ज्यादा इंकॉर्पोरेट करना है, ये आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू शो यू दिस स्लाइड्स। यस सर। So next is basis and promise of the value adopted. So basis क्या है? We have already discussed the basis of valuation under IBC is to identify fair value as defined under regulation 21 HB of the IBBI insolvency regulation process for corporate persons regulations 2016, and liquidation value as defined under regulation 21K of the IBBI insolvency regulation process for corporate persons regulation 2016. So you have to mention whether you are doing it for fair value or you are doing it for liquidation purposes. Then for promise. So promise means you have to use, so whether you are doing valuation of an asset on a standalone basis, you are doing valuation of the assets in a slump state, you are doing valuation of a set of assets collectively, you are doing valuation of the assets in parcels, you are doing valuation of the CD as a going concern, or you are doing valuation of the businesses of the CD as a going concern. So first you have to mention the premise adopted, and then you have to justify why you have used this premise. Two things you have to mention.
Then valuation approaches and methods of the valuation applied. Whether you are using market approach, income approach, cost approach. So you have to give a conceptual description of each of these approaches with simultaneously discussions as to applicable or non-applicability of assignment on hand and reasoning for selected, why you have selected that particular approach, why not the other approaches. You have to give the details. Then relevant discounts and premiums. So valuer should provide a detailed description of all relevant discounts and premiums considered during the valuation process along with the rationale for each adjustment. So in the end, you have to give, when you have, let us suppose you are doing the valuation of a land, you have collected the data from the market for a particular land, then you have to mention why so much weightage you have applied, why positive weightage or why negative weightage. That is what each and everything you have to apply. You have to give that details about that. So you have to give details about relevant report. Then you have to give the details about the sources of data and inputs used along with the rational justification, neighborhood analysis, registered data from the sub-registrar, market course survey, online property portals, local trends, macroeconomic and microeconomic indicators. Then you have to provide approved FAR details and analyzing possibility of enhanced FAR from the asset maximization view and any other source to be specified. Then the description of inspections and our investigations you have taken, on which date you have visited the site, physical measurements and photographs evidence you have taken, observation on conditions, location, advantages, encumbrances, interviews with local agents and verification of property access and marketability. Any other details which you consider which you need to mention. Then sustainability and functional factors impacting valuation. Environmental, which you have been skipping so far. So economic, environmental factors, information about environmental factors considered, social factors consider connectivity, proximity to social infrastructure, schools, hospitals, etc. Then governance of the property, whether it is governed by RERA compliance, municipal approvals, zoning and land use conformity, and any other regulatory compliance approval that affect the lawful use of the asset. Right to sell, transfer, lease, develop the property. Then you have to give significant or special assumptions and or limiting conditions. Title verification subject to legal opinion. Assumed soil bearing capacity suitable for construction. Assumed free of unknown encumbrances unless stated. Estimated marketability based upon current economic conditions. Pending litigation, if any, and impact on the valuation. Then valuation and rationale of for valuation. So fair value so much rupees, liquidation value so much rupees. Rational means based on analysis of comparable transaction, market trends, property conditions, and regulatory constraint. Book value you may give. Then caveats, limitation, and disclaimers. So caveat, limitation, and disclaimers as per IBBI. These are available on IBBI website. You can use these caveats, limitations, and disclaimers in the valuation reports as per guidelines 2020. Then summary of conclusions. A detailed video on CLD, caveats, limitations, and disclaimers is also uploaded on the official website of the CEV, as well as this literature is also available on the official website of the authority. If you want to read, you can visit ibbi.gov.in. अगर आपको उसके बारे में वीडियो या कुछ डिस्कशंस देखने हैं तो सीवीज रजिस्टर्ड वैल्यूज क्लब का लॉगिन करिए, वहां पर CLD लिखिए, वहां पर आपको ये पूरा वीडियो आ जाएगा. काफी डिटेल वीडियो है
और वहां पर एक एक के अलावा 2-3 वीडियोस और भी हैं और बेस्ट प्रैक्टिसेस के भी वीडियो हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो काफी कुछ आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या मेरे एसेट क्लास के लिए जरूरी है, क्या मेरे एसेट क्लास के लिए जरूरी नहीं है, और क्या इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से सूट करता है और क्या सूट नहीं करता है। यस सर। So, in the end, you have to provide summary of your conclusion. The valuation report in this section would conclude the identified rights, the approach and methods adopted, data availability, and provide final calculation workings. And then you can attach certain extras such as appointment letter, engagement terms, site photographs, light layout maps, title documents, market data extracts, minutes of the meeting discussions held with the committee of creditors. So this is basically a format of valuation report. Additional information items may be included in the specific asset class as required. And of course, as already Sandeep have told you that you have to mention VRIN number in the footer on the left side of each page of the report. So this is a basic template which is given by IBPI for land and building value. Similarly, they have given templates for plant and machinery and security and finance values. So these are the minimum things which have to be mentioned in the valuation report. And if you want to give additional information, there is no restriction. You may include for specific asset classes. So this is all about this topic. दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। और जैसा मैंने आपको पहले भी हम हर सीईपी में बताते रहे हैं, अभी आपको अप्रोचेस डिस्कस करनी जरूरी है। आप इनकम अप्रोच से कर रहे हैं, मार्केट अप्रोच से कर रहे हैं, कॉस्ट अप्रोच से कर रहे हैं वैल्यू, और उनमें से अगर आप मार्केट अप्रोच से कर रहे हैं तो कॉस्ट अप्रोच से क्यों नहीं कर रहे हैं, और इनकम अप्रोच से ही क्यों कर रहे हैं, ये भी आपको अब मेंशन करना जरूरी है, जैसा मैं आपको फ्रॉम द डे वन आपको बताता रहा हूं। और उनमें से अगर आप तीनों से कंपेयर करते हैं तो तीनों की क्या क्या वैल्यू आएगी। कुछ ऐसे एसेट क्लासेस एसेट्स होते हैं जो आपको तीनों अप्रोचेस से ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे, या एक अप्रोच में डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। तो उनमें आपने क्या क्या वर्कआउट किया और उसके उनमें से आप कौन सी वैल्यू को फाइनली उसमें साइन करके दे रहे हैं, वो भी आपको वहां पर डिस्क्लोज करना पड़े। दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, जैसा सर ने आपको बताया, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके साथ आप नंबर ऑफ एनेक्चर्स लगा सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन सीट्स लगा सकते हैं, अपना डिटेल लगा सकते हैं, आपने जो जो वहां पर फाइंड आउट किया वो लगा सकते हैं, फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं, और जो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आपने वहां पर कलेक्ट किए या फिर आपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो जो कलेक्ट किए वो नंबर ऑफ एनेक्चर्स आप ऐड कर सकते हैं। बट मिनिमम ये आपको इंफॉर्मेशन देनी ही है। हर एसेट क्लास के लिए अलग अलग वहां पर रिक्वायरमेंट है, वो आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आपने किसी वजह से नहीं दी, देन वो आपकी वैल्यूएशन चैलेंज किया जा सकता है, या फिर आपको उसके बारे में शो कॉज नोटिस दिया जा सकता है, या उसके बारे में आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है, बिकॉज इट इज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नाउ। अभी तक हम जो मर्जी कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। और दूसरा, मैक्सिमम केसेस में मैंने देखा है पीयर रिव्यू करते वक्त कि हम लोग बैंकिंग का फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, बैंकिंग और आईबीसी के अंडर बहुत ज्यादा फर्क है वैल्यूएशन फॉर्मेट का। उनका पर्पज है फाइनेंस करना, यहां पर हमारा पर्पज है इंसॉल्वेंसी के केसेस को हैंडल करना, या एनसीएलटी में रिपोर्ट आपकी जाएगी। तो उस केसेस में दोनों में फर्क है। आपने देखा जो बैंकिंग सेक्टर में जितना का जितना डाटा मांगा जाता है, यहां पर 2 पॉइंट में कवर हो जाता है। सिर्फ 2 पॉइंट में आपको वो सारा कवर करना है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें अलग हैं। तो हमें वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट शू। हमें उससे बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा कि हम अभी क्या क्या करना जरूरी है, एज पर गाइडलाइंस, एज पर ड्यू डिलिजेंस एंड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द आईबीसी कोड। तो ये एक बहुत ट्रिमेंडस एफर्ट किया गया है। बहुत मार्वलस डॉक्यूमेंट आपके लिए, एक लैंडमार्क एक डिसीजन लिया गया है, और एक आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि आपको एक परफॉर्मा, एक स्टैंडर्डाइज या यूनिफॉर्म परफॉर्मा बनाकर दे दिया है कि कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको पता चल गई है कि मुझे क्या देना है। तो इसके साथ अगर आप अभी से ही काम करना शुरू कर देंगे तो ये आगे के लिए बहुत फायदेमंद होगा, और आपको काफी लिटिगेशन और एम्बेरसमेंट और किसी और एडवर्स एक्शन से आपको बचाकर रखेगा। ओवर टू यू सर।
So thank you, Sandeep ji. This is all for today's CEP session. So if you have any doubt about this, you can discuss it here. So friends, if you are having any doubt related to these two topics, you can unmute yourself and discuss. We will discuss the non-related topics in the 0 hour. अभी ऑब्जर्वर्स हमारे साथ हैं, तो अभी हम सिर्फ जो सेशन से रिलेटेड डिस्कशन है वो उसी पे कंसंट्रेट करेंगे, उसी पर रिस्ट्रिक्ट करेंगे. अगर आपका उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है, दैट वी विल टेक इन द 0 hour आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन. सर हमारा कोई क्वेश्चन नहीं, हम लीव कर सकते हैं? नहीं सर, अभी नहीं लीव कर सकते. अपनी जिम्मेदारी समझिए, यहाँ पर सिर्फ बैठने और आने के लिए नहीं आए हैं, या आपके फायदे के लिए यहाँ डिस्कस किया है. दिस शो इज टोटली स्पॉन्सर्ड बाय यू. आपके फायदे के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं. मुझे तो पता है सब कुछ, राजेंद्र सर को भी पता है. यह आपके लिए शो स्पॉन्सर किया गया और आपने स्पॉन्सर किया. इट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली. प्लीज रियलाइज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर मेंबर. आई एम सॉरी टू से दैट. यस सर, एनी अदर? सर, वेयर वी कैन डाउनलोड द फॉर्मेट सर? सर देखिए, ये आपको वहां पर, आपको अभी मैंने न्यूज दिखाया था, उसमें ये अवेलेबल है, वहां से कर सकते हैं. आईबीबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप कर सकते हैं. वहां पर पूरा का पूरा है. आप उसको वहां से कॉपी करके अपने रेलेवेंट एसेट क्लास का आप निकालकर उसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसा मैंने बोला, कस्टमाइज कर सकते हैं. हम लोग हमारी मॉनिटरिंग कमेटी उसको कोशिश कर रही है. जैसा अभी राजविंदर सर ने आपको एक स्लाइड दिखाया था एक्सेल शीट में, हम उसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे ही हो जाएगा, हमारी वेबसाइट पर आ जाएगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन अभी तक सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग का किया है, वो आगे चल रहा है प्रोसेस. उसमें कुछ चीजें हैं जो हम और ऐड करना चाहते हैं, जो कि आपको एक कस्टमाइज करने में हेल्प हो. लेकिन जितना मिनिमम है अभी तक हमने वही यहाँ पर दिखाया है, जो मिनिमम उनकी तरफ से गाइडलाइंस आई है. आप चाहें तो वहां पर जाकर उस पर्टिकुलर को डाउनलोड करके, अगर कन्वर्ट होता है तो आप कन्वर्ट करके आप उसको एक्सेल में या वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं. सर, एक और डाउट है, टॉपिक के रिलेटेड नहीं है बट वैल्यूएशन के रिलेटेड है. हाँ बताइए सर. लेट्स से कोई भी लेंडर का पीएसयू बैंक का केस एनसीएलटी में आ गया है, बट स्टिल बैंकर वांट्स कि मेरे को उसका वैल्यूएशन आप दे दो, आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो, आप बैंक के बिहाफ से मुझे एक वैल्यूएशन दे दो. क्या अपन कर सकते हैं वो चीज? देखिए, अगर बैंक के हिसाब से आप करना चाहते हैं तो वहां पर लिखिए फॉर बैंकिंग पर्पस ओनली, नॉट फॉर आईबीसी और एनी अदर लिटिगेशन और कोर्ट पर्पस या टैक्सेशन पर्पस या फिर एम्बेसी पर्पसेज. ये आप मेंशन कर दीजिए. ये में पर्पस आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर ही दिया हुआ है पर्पस. तो पर्पस में आप क्लियरली मेंशन करिए अपने आप को सेफ रखने के लिए, आप किस पर्पस के लिए कर रहे हैं. पर्पस कुछ भी हो सकता है. वो सेल्फ असेसमेंट चाहता हो और आप वैल्यूअर, तो आप क्यों मना करेंगे? करना भी नहीं चाहिए. हाँ बिल्कुल. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा. एक शिप है, एक एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, और एक कार है. बहुत बढ़िया कार है, मारुति भी हो सकती है या फिर बहुत बड़ी कार भी हो सकती है, बीएमडब्ल्यू भी हो सकती है. ये किस लिए बनी है और सबसे सेफ ये कहां पर है? कैन एनीवन टेल? अ शिप, अ एयरक्राफ्ट एंड अ कार. शिप हैंगर पे सर, कार गैरेज में. यस सर. देखिए, एक शिप है, वो एक शोर पे सबसे ज्यादा सेफ है, और जैसा सर ने बताया, एक एरोप्लेन है, वो हैंगर में सबसे ज्यादा सेफ है, और अगर कार है तो वो गैरेज में सबसे ज्यादा सेफ है. लेकिन क्या ये इस पर्पस के लिए बनी है? नो, नॉट. क्या कार गैरेज में खड़ी होने के लिए आपने खरीदी है? क्या जहाज को आपने That is not हैंगर में meant for खड़े होने that. के लिए खरीदा है? इंडिगो बोलेगा भाई मैंने हैंगर में खड़ा. ठीक है, अभी उन्होंने पिछले दिनों ऐसा किया था. दैट इज सेपरेट इशू, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ डिस्कशन. हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, कंट्रोवर्शियल कोई टॉक नहीं करेंगे. लेकिन एग्जाम्पल है कि अगर कोई भी जहाज है, उसको हैंगर में खड़ा कर दिया, क्या वो उसके लिए बना है? एक पानी का जहाज है, क्या वो सबसे ज्यादा सेफ तो वो वहां पर है, जेटी में है या सी शोर पर है, पर क्या उसके लिए बना है? नहीं. बने तो वो जिस पर्पस के लिए, उसके लिए है. तो वो जब अगर मूवमेंट करते हैं तो क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या नहीं लेनी चाहिए. इंश्योरेंस का पर्पस ये नहीं है कि भाई आपके पैसे पूरे हो जाएंगे. अरे इंश्योरेंस होगा तो गाड़ी भी ठुकेगी ना. तो आपका पर्पस ये नहीं हो मैंने तो इंश्योरेंस लिया भाई, कोई बात नहीं. अगर इंश्योरेंस में अगर कोई चीज हो गई, अगर मेरा इंश्योरेंस और मेरी टांग टूट गई, तो जिम्मेदारी तो मेरी है ना. वो ज्यादा ज्यादा पैसा दे देगा, पेन तो मुझे भुगतना पड़ेगा ना. यहां पर भी ऐसा वैल्यू, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा दूसरे का, वो आपको शो कॉज नोटिस दे देगा या एक्शन ले लेगा, लेकिन नुकसान तो आपका होगा ना. तो इसीलिए जब भी गाड़ी सड़क पर आएगी, या जहाज हवा में उड़ेगा, या पानी का जहाज पानी में चलेगा, सी के अंदर जाएगा, टाइड्स में जाएगा, तो ये हमारी जिम्मेदारी है उसको सेफ रखना और तरीके से चलाना, और प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस और सारे के सारे कंप्लायंसेस पूरे करने के बाद ही उसको ड्राइव करना. ओके, अगर आप इस एग्जांपल को अपने प्रोफेशनल फील्ड से कोरिलेट करेंगे तो आपको इसके काफी
ज्यादा आंसर आपको मिल जाएंगे इसके रिलेटेड। एम आई राइट सर, योगेश सर? जी जी बिल्कुल सर। तो आप कोशिश करिए कि आप ये सोचकर चलिए कि भाई मैंने कार खरीदी है तो मैंने उसको गैरेज में नहीं खड़ा करना, बाहर निकालना है। लेकिन बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको जरूरी है उसके पेपर्स पूरे होने, उसकी ओनरशिप पूरी होनी। उसके बाद उसको चलाने के लिए ड्राइवर सही होना चाहिए, या फिर आपको पूरा का पूरा पूरा माइंड से, होशोवास से, जो एक टेक्निकल वर्ड है, पूरे होशोवास में हाजिर नाजिर जानकर मैं उसको चलाऊंगा। और उसके बाद में तीसरी चीज, रोड कैसी है कैसी नहीं है वो सबसे एंड में आता है। राइट। रोड अच्छी है नहीं, दैट इज सेपरेट इशू, लेकिन चला तो आप रहे हैं ना सर। जी 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 और नुकसान भी आपका होगा। जिस ठेकेदार ने सड़क बनाई है उसका कोई नुकसान नहीं होगा, या जिस डिपार्टमेंट ने सड़क बनाई है, पीडब्ल्यूडी है या कोई स्टेट हाईवे है या फिर कोई और बड़े बड़े से बड़ा डिपार्टमेंट, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई और डिपार्टमेंट है, आई डोंट वांट टू टेक एनी नेम ऑफ एनी डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई हाईवे बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया, कुछ भी है, अगर उसमें कोई नुकसान है तो, अगर उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट होता है तो लॉस तो आपका ही होगा, उनका कुछ नहीं जाने वाला, वो ज्यादा ज्यादा रिपेयर कर देंगे। तो ये सोचकर हमें आगे बढ़ना है, और बढ़ना तो पड़ेगा। गाड़ी गैरेज में तो खड़ी नहीं रहेगी, और कब तक खड़ी रहेगी? गाड़ी तो चलानी पड़ेगी। लेकिन सब कुछ सोचने के बाद, सारा कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने के बाद, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने के बाद ही आप आगे बढ़ें और पूरा परफेक्टली बढ़े। आजकल तो चलान भी बहुत महंगा हो गया। राइट राइट, थैंक यू। यस सर, एनी अदर डाउट? Sir, we are not supposed to do agriculture land, no, as per this one. But already bank financed. They came for a one-time settlement or something. So they are already financed. So you can go ahead with that. So whether we can do, sir, because this is not first time, no, just for OTS or something. It is become NPA. That is very just what interesting is question and very relevant also for this platform. Okay. देखिए, as a CBDT valuer, we are not authorized to do any valuation related to agriculture and plantation or any other type of things, rubber plantation or any other forestry or plantation as a CBDT valuer. सबसे पहले आप, इसलिए सर ने आपको बताया पर्पस क्या है। अगर ये कैपिटल गेन या CBDT से रिलेटेड है तो वी आर नॉट ऑथराइज्ड। ओके, एज अ आईबीसी वैल्यूअर या फिर आप आईबीबीआई से रिलेटेड है या एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप उसमें वैल्यूएशन दे सकते हैं, इफ इट इज फॉर लैंड, इफ इट इज फॉर बिल्डिंग, और इट इज फॉर एनी अदर इमूवेबल एसेट, नॉट एनी अदर इमूवेबल एसेट, इमूवेबल एसेट रिलेटेड टू रियल एस्टेट, एज अ लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर। ओके, और अगर बैंकिंग सेक्टर में है तो बैंकिंग सेक्टर में आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर देखिए या आपका एम्पॉयमेंट लेटर देखिए, उसमें अगर ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो आपके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन सीबीडीटी के लिए एज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यूअर आप उसको नहीं दे सकते। लेकिन अदर देन सीबीडीटी अगर है, अगर वो मांग रहा है, तो आप उसके लिए, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी आप या फोरम से हम डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और यहां पर आईबीबीआई के लिए भी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अपने एसेट क्लास के अंदर रह के, बाउंड्रीज के अंदर रह के आप कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो है जो हमने एक रिलीज किया था, मैं आपको उसका लिंक शेयर करूंगा, लेकिन वो यूट्यूब में पड़ा हुआ है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूअर कर सकते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर कर सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर नहीं कर सकते, कौन सी प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूअर देखने में प्लांट एंड मशीनरी है लेकिन नहीं कर सकते। जैसा मैंने पिछले उसमें एग्जांपल दिया था, एक वाटर टैंक है, एक वाटर टैंक है जो कि पानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। एक वाटर टैंक है जो कि मशीनरी या प्लांट के लिए काम करने के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा है। दो वाटर टैंक है। वाटर टैंक एक से ही है, सब कुछ क्वालिटी एक है, क्वांटिटी उसके साइज एक है, स्पेसिफिकेशन एक है। लेकिन एक वाटर टैंक है जो कि पानी ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ लेबर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वो लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर करेगा। अगर वही पानी अगर प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहा है, वही पानी अगर प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हो रहा है प्लांट के अंदर, देन लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर विल नॉट डू दैट वैल्यूएशन। अगर उसने कर दिया तो वो दैट विल बी इन ट्रबल। वो ही वाटर टैंक अगर प्रोसेसिंग में उसका पानी इस्तेमाल हो रहा है तो वो प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूअर ही करेगा। सर एग्रीकल्चर सर इट्स एन एग्जांपल ऑफ लाइक पावर प्लांट, मैंने अभी रिसेंटली किया था एक, तो वहां पे वाटर रिजर्वायर है 50 क्यूबिक मीटर का, तो वो प्लांट एंड मशीनरी में आएगा बिकॉज वो मेरे एफएआर में आ गया। बट जैसे आपने बहुत बड़े एग्जांपल दिया, जो छोटे छोटे टैंक्स आ गए हैं, ओवरहेड टैंक्स है, पीवीसी के टैंक्स है, तो वो लैंड बिल्डिंग वाले देख सकते। बिल्कुल, जैसा एक चिमनी है,
चिमनी हम एक अभी अभी हर जगह पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से चिमनियां, या फिर ब्रिक क्लीन के ऊपर हम एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ब्रिक क्लीन के ऊपर एक चिमनी बनी हुई है, 40-50 फीट ऊपर है, और उसको ईंटों से, ब्रिक से बनी है, या आरसीसी से बनी है, या इस तरह की चीजों से बनी है। तो आप सोचेंगे यार ये तो मैं कर दूंगा, मैं तो लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू, इसमें सीमेंट भी इस्तेमाल हुआ, लैंड ब्रिक भी इस्तेमाल हुई है, कंक्रीट भी इस्तेमाल हुई है, आई एम ऑथराइज। नो, नो, एज अ लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यू यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू डू दिस वैल्यूएशन। दिस वैल्यूएशन हैज टू बी डन बाय द प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूअर। तो ऐसी काफी चीजें हैं। पूरा का पूरा एक शीट बनाकर हमने एक वीडियो बनाने की कोशिश की है, और आपको बताने की कोशिश की है कंपैरेटिव स्टेटमेंट कि कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर किस किस वैल्यूअर के लिए रेस्ट्रिक्शंस है। जैसे अगर फेंसिंग है, अगर वो मशीनरी के चारों तरफ है तो प्लांट एंड मशीनरी करेगा, अगर वो प्रेमिसेस के चारों तरफ है तो लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर करेगा। Sir, maybe we can have a detailed session on these questions, maybe, you यस know. सर, यस सर, बहुत These are जरूरी है सर। becoming और really long for discussions. यस सर, So बहुत we can have टाइम another ज्यादा लग session जाएगा। for this kind of questions, maybe raised by the guys. बिल्कुल बिल्कुल सर। सर थोड़ा सा Thank you. जो Okay, मैप अप्रूव्ड और एनओसी जो वेरीफाई करने का, उसके ऊपर थोड़ा पॉइंट बताएंगे। राजविंदर सर, आर देयर? यस सर। कांसल साहब, जी सर। मैप अप्रूव और एनओसी जो वेरीफाई करने की ड्यूटी लगाता है बैंक, उसके ऊपर थोड़ा क्लियर करेंगे पॉइंट। वो हमारी ड्यूटी है कि नहीं है, क्या है, और सर कैसे करना है इसको। आज की डेट में अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो दो चीजें हैं। एक तो चीज है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो एनओसी बेसिकली क्या कि अगर कोई प्रॉपर्टी, दो तरीके की एनओसी है। एक तो है कि कोई प्रॉपर लैंड है जो अनऑथराइज्ड एरिया में पड़ती है, तो फॉर दैट इन सर्टेन स्टेट्स दे आर चार्जिंग certain development charges they are you have to pay, and after that you have to get no objection certificate. And once NOC is issued, then only then you can get your plan approved. Without NOC you cannot get the plan approved from the authority. सर मेरा क्वेश्चन ये Second thing is, many time when you are doing valuation, so maybe that in certain banks format or many other things, that you have to check whether the client has paid the property tax, water and sewerage dues, etc. That is another part of सर मेरा NOC. क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन ओनली फॉर अप्रूव्ड मैप और एनओसी इशूड बाय द डिपार्टमेंट। वही बोल रहा हूँ कि एनओसी भी दो तरह की होगी। सर एनओसी एक एनओसी तो होगी रिलेटेड टू कि अगर बिल्डिंग। आपने कोई प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करनी है, तो अगर तो वो लैंड है तो फिर तो सिर्फ आप एनओसी देखोगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो एनओसी मींस के वो डेवलपमेंट चार्जेस तो सर आइदर द उसको क्लाइंट बैंक हैज बैंक पेड बोलता है, और द, सर बैंक बोलता है इसको वेरीफाई करोगे जेन्युइन है। तो आजकल जो एनओसी मिल रही है सर, उसके ऊपर वो जो अगर जो वो ऑनलाइन है तो आप उसके ऊपर लगा होता है उनका सिक्योरिटी कोड लगा होता है सर वहां पर, सर आप हम उसको नहीं चेक वो कर चेक कर सकते हैं। सकते ना। आप हाँ उसको जी। चेक कर सकते हैं। दूसरा हम सर, नहीं, आप देखिए सर, हम लोग यहाँ पर वो क्या कर रहे जिसने हैं। अप्लाई किया है या जो डिपार्टमेंट का बंदा वही देखेगा देखेगा। नहीं नहीं सर, नहीं सर सर, बात सुनो। आप उसके ऊपर लगा होता है जो, जिसमें आप अगर आप गूगल लेंस में जाके उसको चेक कर सकते हो कि वेदर ये रीजनल है या नहीं है। नहीं यस। सर, नहीं पता चलता। दूसरा सर, आप एक होता है ऑफिशियल उसमें। लेटर, आप ऑफिशियल लेटर कारपोरेशन को या इशूइंग अथॉरिटी को लिख सकते हैं, और वो सेफ्टी जवाब दे सकते प्रोसीजर, हैं, लेकिन वो जवाब देते नहीं है। तो इसलिए बेसिक दिस सेफ्टी इज दिस इज प्रोसीजर। नॉट अ क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हमारे हाथ में नहीं है। अगर हमारे हाथ में होता तो हम जरूर उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। हमने काफी सारे रिक्वेस्ट लेटर डाले हैं लोकल बॉडीज को और दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी, लेकिन वो उसका जवाब कभी नहीं देते। इसका काफी विरोध चांसेस सर में नहीं उठाना देते। पड़ेगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुछ केसेस में वो हमें उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए एक लेटर इशू कर देते हैं। दे टेक सर्टेन अमाउंट, कुछ चार्जेस छोटे से अमाउंट लेते हैं। जलंधर में वो कुछ फिक्स है वहां पर। तो आप उसको जमा करिए और लेटर दीजिए, तो वो उसका जवाब उसको आपको ढूंढ कर दे देते हैं। लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं है। सो वी कैन नॉट कंटिन्यू रिलेटेड इसका टू दिस सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। डिस्कशन रिलेटेड टू दिस। एक लेकिन एक अभी पंजाब गवर्नमेंट का एक अभी लेटेस्ट आया है 2025, जो अभी गजट आया है, उसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं एफएआर पर। सर मुझे कुछ हाईलाइट कर पाएंगे राजविंदर सर? और उन्होंने किया है कि अगर आपने एफएआर परचेज करनी है तो उसके लिए सर्टेन अमाउंट पे करके आप एफएआर कर सकते हो।
कमर्शियल में उन्होंने कुछ एरिया जो कोर एरिया कहता है उसमें उन्होंने 100% कवरेज तो अलाउड कर दी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ईसीएस है वो आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी पार्किंग के लिए स्पेस। तो पार्किंग के लिए अगर आपने स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो विद इन योर प्रीमाइसेस तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको डिपेंड करेगा किस एरिया में पड़ता है। वो फीस है 1 ईसीएस के लिए तकरीबन 2 लाख से लेके 5 लाख तक। तो आप ईसीएस भी बाय कर सकते हो, आप एफएआर भी बाय कर सकते हो। तो आज की डेट में अगर आप वैल्यूएशन कर रहे हो तो उसमें यही प्रॉब्लम आएगी कि अगर कल को आप कह रहे हो कि वो एफएआर ओवर है जो अप्रूव्ड होनी चाहिए, उससे ज्यादा उन्होंने कवर किया है, तो क्लाइंट कहेगा कि मैं उसको बाय कर सकता हूँ। तो यू कैन गिव द डिटेल्स कि हाउ मच मनी ही हैज टू पे फॉर बाइंग दैट एफएआर, so that value has to be deducted. तो मेरी भाई करने वाला सोल्यूशन इससे निकालिए इससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर शेयर किया गया है। आप इससे हो सकता है आपके स्टेट में ये एप्लीकेबल इससे मिलता जुलता ही कुछ होगा, क्योंकि यूनिफाइड अभी ऑलमोस्ट सभी गवर्नमेंट्स की तरफ से किया गया। पंजाब यूनिफाइड बिल्डिंग रूल्स 2025 ये लेटेस्ट रिलीज है। तो इसमें आप ये 15 दिसंबर 2025 को रिलीज किया गया है। इसमें काफी चीजें हमने कोशिश की है इस आर्टिकल में कवर करने के लिए, जो एज अ वैल्यूअर एज अ इंजीनियर आपके लिए जरूरी है। और थोड़ा बहुत इधर या उधर करके सब स्टेट्स में सेम है। तो अगर आप इस आर्टिकल को पूरी तरह से पढ़ेंगे तो आपको काफी चीजें जानकारी मिल जाएंगी, और डिटेल जो है वो यहाँ पर इसमें क्लिक हेयर बटन करेंगे तो आपको पूरा गजट यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप उसको थोड़ा सा गो थ्रू करिए, स्पेशली अगर आप पंजाब हरियाणा या उसके आसपास के किसी लोकेशन में है। तो इसमें काफी चीजें हैं जो आपके और मेरे काम के लिए है एज अ वैल्यूअर, और थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हर स्टेट में ऑलमोस्ट सेम है। तो उसमें आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो जो भी आर्टिकल शेयर किया जाता है आपके ग्रुप में या वहां पर आप अनाउंसमेंट सेक्शन में आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद थोड़ा उसको कोशिश करिए उसको पढ़ने का। तो जब तक हम अपडेट नहीं होंगे तो आगे आने वाले टाइम में हमें ऑब्सोलेट कर दिया जाएगा। बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़ी से बड़ा एसेट या बड़े से बड़ा एक कोई भी एंटिटी है, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करती तो आगे आने वाले टाइम में वो ऑब्सोलेट कर दी जाएगी और बाहर कर दी जाएगी। जैसे कि नोकिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, और भी काफी एग्जांपल्स हैं, लेकिन ऑफिशियली हम यहाँ पर इसको पर्टिकुलर कोट नहीं कर रहे हैं। इट इज जस्ट एग्जांपल, वेग एग्जांपल फ्रॉम माय साइड। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे तो अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में आपकी या मेरी कोई जरूरत नहीं है। तो हमें अपने आप को अपडेट करना ही पड़ेगा। जैसे पुरानी कारें हैं, वो आज की डेट में अगर कोई ना तो कोई खरीदना चाहता है, ना ही उसकी वैलिडिटी है। 15 साल बाद अभी तो आरसी भी खत्म हो जाती है, उसको रिन्यू कराने के लिए भी आपको इंस्पेक्टर के पास जाके चेक कराना पड़ता है, तभी वो 5 साल के लिए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। तो वो ऐसी सिचुएशन या ऐसी एम्बेरसमेंट हमें फेस ना करनी पड़े। अपने आप को अपडेट, अपने लिए टाइम तो निकालना ही पड़ेगा आपको। अपने लिए निकालना है, मेरे लिए नहीं निकालना। आपके अटेंड करने से सेशन या आपका आर्टिकल पढ़ने से या आपका न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरा फैन कोई ज्यादा स्लो फास्ट नहीं चलने लग जाएगा, मेरा एसी ज्यादा ठंडी हवा नहीं देगा। आपके ही फायदे के लिए मैं आपको बार बार, हम लोग चीख चीख के आपको बताते हैं, आपको हर बार गाइड करते हैं आपके फायदे के लिए। मेरा या डॉक्टर राजविंदर सर का, राकेश कुमार जी का या शुक्ला जी का या अविनाश कांबले जी का कोई फायदा नहीं होने वाला। आपका ही अपना फायदा है। एनीथिंग एल्स, अदरवाइज वी आर गोइंग टू कंपाइल टुडे सेशन। सर एक लास्ट क्वेरी है, जैसे आपने कैटेगरीज में बताया कि ये लैंड बिल्डिंग का है, ये पीएम का है। बहुत बार ये आता है कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर है वो किसी आरबी एंटिटी को ज्वाइन कर लेते हैं फॉर एनसीएलटी केसेस, 3 लोग मिलकर कंपनी बना लेते हैं, बट स्टिल एज ए आरबी वो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। इज इट अलाउड? नहीं नहीं सर, नॉट अलाउड। जैसे ही आप एंटिटी ज्वाइन करेंगे और आपका आपका आरवीओ की तरफ से आपका रिकमेंडेशन लेटर जाएगा, उस दिन से आप या जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट लेटर वहां से एंटिटी से इशू हुआ है, उस दिन के बाद से आप अपनी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशंस नहीं कर पाएंगे। इंडिविजुअलिटी आपकी खत्म हो जाती है। नॉट फॉर आप एचवाईआर एनसीएलटी, भरेंगे, लाइक फॉर एचवाईआर में बैंक। नील की एंटिटी, नील का रिटर्न आएगी, लेकिन आपकी जो कंपनी की रिटर्न है वहां पर जो भी आप साइन करेंगे या नहीं करेंगे वो आपकी रिटर्न आपकी कंपनी भरेगी। इंडिविजुअलिटी आपकी खत्म है। राइट सर, बट फॉर एनसीएलटी, फॉर बैंक पर्पस, फॉर वीजा पर्पस, फॉर एनी अदर पर्पस, सब नेटवर्क देखिए पर्पस। देखिए, हेयर दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर आईबीसी और आईबीबीआई और रजिस्टर्ड वैल्यूअर। आपके एज अ जी रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हुई है, ठीक जी है ना। जी जी। बाकी की जगह बाकी तो, चीजें तो कर ही बाकी सकते की हैं ना। जगह का कोई ताल्लुक नहीं है सर इससे। राइट सर, राइट राइट। इन तो शॉर्ट, इन इंडिविजुअल। शॉर्ट, राइट सर, राइट। एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर मैं बात कर रहा हूं जी इन ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जी जी जी। राइट ठीक सर, है। गॉट योर तो पॉइंट। हाँ, गॉट योर मतलब पॉइंट, हम थैंक यू। उसमें हम आईबीसी या इस पर्पस के लिए हम एलिजिबल नहीं है।
लेकिन अगर आपसे कोई कैपिटल गेन के लिए कराना चाहता है, वो सेपरेट स्टैचू है, जी जी सेपरेट लॉ के अंडर आपकी एम्प्लॉयमेंट हुई है, बैंकिंग के अंडर आपके सेपरेट रूल्स रेगुलेशंस के अंडर हुई है। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आईबीबीआई से रिलेटेड बात कर रहे हैं, रजिस्टर एज अ रजिस्टर्ड वैल्यू। तो योर एग्जिस्टेंस, वहां पर आपकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस आपकी खत्म है, आप एंटिटी के लिए काम करेंगे एज अ रजिस्टर्ड वैल्यू फॉर एंटिटी। राइट राइट। ओके, बाकी जगह के लिए कोई ऐसी अभी तक नहीं है। आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ एक्ट के अंदर कुछ फेरबदल हो, लेकिन एज ऑन डेट नहीं है। अभी आपने सेबी की गाइडलाइंस आपने देखी होंगी, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आरवीज ही जी ऑथराइज्ड है करने के लिए। बहुत पॉजिटिव स्टेप है, वेलकम स्टेप है, और हम लोगों के राइट लिए सर। आगे आने वाले टाइम में बहुत फायदा होने वाला है। एक मास्टर स्ट्रोक बन गया है, अब उसको कॉपी करके बाकी जगह भी वो चीज इंप्लीमेंट की जानी चाहिए या जाएगी। तो एक जी लैंडमार्क डिसीजन आ गया है एक अथॉरिटी का, चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो। तो एक हमारी एग्जिस्टेंस और एक रेपुटेशन और एक हमारी यूजेबिलिटी उसकी वजह से काफी डिफाइन हो जाएगी। तो सर जैसे एसबीआई के लिए एक्टिव मेंबर का एक लेटर आरबीओ की तरफ से भी जाता है, तो जी फिर उसमें तो आप मेंशन करोगे ना ही इज ऑलरेडी लिस्ट इन अदर आरबी। सर, देखिए वहां पर आपकी इंडिविजुअलिटी का जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो आप यहाँ से आरबीओ से ले, आप सीवी से भी ले सकते हैं। तो वहां पर ओके आपको आपको ऐसा मेंबर का उनका ऐसा कोई फॉर्मेट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कहीं भी। ओके ओके। तो फॉर्मेट अपन में ले वो सकते लिखा हैं। हुआ है कि ये मेंबर है और उसकी रेपुटेशन ठीक है और उनके खिलाफ कोई लिटिगेशन का केस नहीं। राइट अगर राइट। फॉर्मेट में वो कल को मांगते हैं तो हमें देना पड़ेगा, तो हमें डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। राइट डिस्क्लोज गॉट करना इट। पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो वो फॉर्मेट मांग रहे हैं आपसे, वो आपको उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। आई थिंक मेरे हिसाब से एनेक्सर 8 में ऐसा कुछ नहीं है। उसमें उसे ये मांगते हैं कि ही इज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और उनका पुराना रेपुटेशन के हिसाब से ही इज एंजॉय गुड रेपुटेशन, और उनका जो करेक्टर एज अ करेक्टर सर्टिफिकेट वो मांग रहे हैं। जी जी इसके जी अलावा आई गॉट थिंक इट। वो कुछ नहीं मांगते हैं। राइट सर गॉट योर पॉइंट सर। थैंक यू अगर सर, कल को थैंक यू वो वेल सर। उसको उसको ऐड करते हैं उस पॉइंट को, तो फिर वो हमें वो करके देना पड़ेगा। बताना ही पड़ेगा बिल्कुल सर। अभी तक ऐसी गॉट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे ऐसा लगता ठीक। है। या एनी थैंक अदर यू। पॉइंट? क्योंकि टाइम हो चुका है और हम लोग अभी कंपाइल करना चाहेंगे। शुक्ला जी मुझसे काफी नाराज है। देखिए, ऑब्जर्वर जब तक हमारे साथ हैं, वो हमारे साथ हैं, तो हमें भी बैठना पड़ेगा सर। एग्रीकल्चर गुरु लैंड की सर कर सकते हैं ना वैल्यूशन? सर, गुरु की आज्ञा से मात है। एग्रीकल्चर लैंड की। सर देखिए, एग्रीकल्चर लैंड का मैंने अभी क्लियर किया है। पहले क्वेश्चन में भी कोशिश की है। किसने पूछा है क्वेश्चन? सर राकेश जी। राकेश कुमार। हाँ सर, देखिए सीबीडीटी में जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, उसमें क्लियर लिखा हुआ फॉर रिमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन एंड अदर क्वेरीज, माइनिंग एंड अदर थिंग्स, वहां पर आप नहीं कर सकते। अलग अलग देखिए, देयर आर सो मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, सो मेनी डिपार्टमेंट, सो मेनी मिनिस्ट्रीज। तो जिसके लिए आप कर रहे हैं, जिससे आप मिले हुए, अगर मैं आपसे मिला हूं तो मैं आपके बारे में बात करूंगा, कामले साहब के बारे में बात नहीं करूंगा। तो अगर आप सीबीडीटी के लिए कर रहे हैं तो सीबीडीटी के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। अदर देन सीबीडीटी अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शन मेरे नॉलेज में नहीं है, बाकी हो तो कुछ कह नहीं सकते। आईबीबीआई के लिए बिल्कुल नहीं। बंसल जी, यस सर। सर जो ये एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे थे अभी एक पार्टिसिपेंट ने लेकिन वो। एग्रीकल्चर लैंड में सर, एक मिनट में लूंगा ग्रेग साहब, मैं आपको अभी जी आता हूँ सर। वापस। देखिए, जी जी। एग्रीकल्चर लैंड करने से पहले आपको बहुत 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 प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। खसरे नंबर, उसके लिटिगेशन के मैटर्स, उनका तकसीम करना, काफी चीजें उर्दू के वर्ड्स हैं जो उसमें ऐड किए गए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी एक वीडियो है, टू अंडरस्टैंड द रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी। आपको मैं बार बार डालता रहता हूँ, बार बार इसमें ग्रुप में भी शेयर करता रहता हूँ। टू व्हाट आर द रेवेन्यू टर्मिनोलॉजी टू बी अंडरस्टूड बाय बाय अ वैल्यूअर, नॉट अ सीबीडीटी वैल्यू। उनके लिए तो एग्रीकल्चर लैंड के लिए हम नहीं It एलिजिबल है, is लेकिन only बैंकिंग के land लिए and buildings. या किसी और पर्पस के लिए आईबीबीए में आपको जो लेटर मिला है वो लैंड एंड बिल्डिंग का मिला है। तो लैंड, एग्रीकल्चर है तो वो लैंड है, लैंड है तो आप वैल्यू कर सकते हैं। सर बैंक बोलता है जो मर्जी लिख दो, मेरे को नेगेटिव पॉइंट डाल सर दो वो सारे। हम डिस्कस नहीं करें, दैट इज आउट ऑफ रिकॉर्ड। मुझे क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, दैट इज योर पर्सनल मैटर। आप करें ना करें, दैट इज योर पर्सनल मैटर। वी कैन नॉट गाइड एनिथिंग। प्लीज सर शेयर तो प्लीज करना पड़ता रेस्ट्रिक्ट है। टू दिस प्लेटफॉर्म ओनली। यस सर, मिस्टर गर्ग। मैं सर वो सॉरी सॉरी थोड़ा टू सा। से मिस्टर राकेश जी, देखिए वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता, दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप पंचर वाला स्कूटर भी 5 किलोमीटर चला सकते हैं, लेकिन चलाना नहीं चाहिए, टायर फट जाएंगे, सर कोई एक चीज फायदा और नहीं है। बताना चाहूंगा, अभी आपने मिस्टर, सेबी यूज किया और एग्रीकल्चर यूज किया। पर्ल ग्रुप जो है मिस्टर भंगू का था, तो सेबी ने 119 प्रॉपर्टीज उनकी ऑक्शन के लिए करी हैं, और उन्होंने एक वैल्यूअर को पॉइंट किया जिसमें 250 एकड़ गुड़गांव के आउटस्कर्ट्स पे लैंड है, जी और इन 70 पैचेस, तो वो भी एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर ही करेगा, और हाँ जाहिर सी बात है लैंड बिल्डिंग वैल्यूअर ही करेगा। बिल्कुल। कमर्शियल और डेवलप्ड प्रॉपर्टीज तो कर ही सकता है।
हाँ देखिए, राइट अगर सर, लैंड है तो सेल्फ लैंड है अंडरस्टूड है बिल्कुल। कि प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू तो नहीं करेगा, जी 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 और एसएफए तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इंटेंजेबल और टेंजेबल में दोनों में फर्क है। जी तो वो जी, सेल्फ अंडरस्टूड इलीगल है कि लैंड हमारे होल्डर। पास ही है, तो हमें ही करनी है। और लैंड हमारे वर्ड में लिखा हुआ है सर्टिफिकेट में, लैंड एंड बिल्डिंग। तो राइट सर। लैंड है वो, बेशक बेशक उस लैंड पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वी आर ऑथराइज टू डू, जैसा मेरी समझ में है। अगर हो सकता है इसके बारे में कोई और किसी का ओपिनियन हो तो वो बता सकते हैं। यस मिस्टर गर्ग। सर लैंड अनडिवाइडेड शेयर में है, देयर आर सो मेनी खसरा नंबर्स, मुश्तरके की है, उसको कैसे आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? कोई सर प्रोसीजर इसी के बारे में एक बहुत नंबर बड़ी और कोड। बहुत सर बड़ी हाँ बहुत वहां बड़ी आप लिख सकते हैं आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। देखिए बहुत बड़ी आप लिख वीडियो है सकते हैं इसके बारे में। आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। हम लोग ज्यादा इसके कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। करेक्ट साहब का तकसीम करा वो लेना चाहिए, उनको बोले तकसीम कराइए तब हम नहीं हो करेंगे। सकती। नहीं तो आइडेंटिफाई कराइए, पटवारी से लेकर लाइए आइडेंटिफिकेशन, लेकिन वो भी इलीगल है। वो भी आप कल को चैलेंजेबल है कोर्ट हाँ में। लिख दो गर्ग साहब, आप ये आइडेंटिफाइड नहीं है। हाँ। गर्ग साहब, और उसके लाइक लिए एक यू पूरी आर वीडियो फ्रॉम। है, एक वीडियो नहीं है। नहीं, अगर आइडेंटिफाइड नहीं है कोई हाँ चीज, जी। देन हाउ इन इन आइज ऑफ लॉ हम जब एक चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, देन वैल्यू कैसे कैलकुलेट सर कर उसकी वैल्यू जो है एज पर जो उसके खसरा नंबर है ना, उसके आगे एरिया लिखा था, 2 कनाल है कि 3 कनाल के, 1 कनाल टुकड़ों में लिए है कैसे, इकट्ठी पड़ी हुई है या टुकड़ों में है, उसी हिसाब से उसकी वैल्यू आपकी अपनी नहीं जजमेंट नहीं, दे सकती है। एक एक टुकड़ा बंसल जी के वहां पड़ा है, एक हाँ टुकड़ा जी हाँ नहीं जी, वो वैल्यू है, डाउन हो एक जाएगी, एक वैल्यू ऊपर डाउन हो है। जाएगी। नो नो सर वो नो। वैल्यू डाउन हो जाएगी, कम हो सर जाएगी सर जज। गर्ग सर साहब, देखिए मैं आप। आपको वो इसमें क्लैरिटी देना आपके आगे में चाहूंगा रह विद जाएगी। लॉजिक। यू आर फ्रॉम हरियाणा, अगर आप जमाबंदी डॉट हरियाणा पे जाओगे, वहां पे कैडेस्ट्रल मैप का एक ऑप्शन आता है यस। थर्ड स्लैब में। अगर आप वहां पे क्लिक करोगे, वहां पे आप उस गांव में उस प्रॉपर्टी पे चले जाओगे विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। वहां पे खसरा नंबर आएंगे, वहां पे क्लिक करोगे, प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको रिलेट करना है सर जब जीपीएस और कैडेस्ट्रल मैप से। नहीं नहीं नहीं, आप आपकी 2 एकड़ लैंड है और उसके अंदर खसरा नंबर 100 लिखे हुए हैं, आप 2 एकड़ को कैसे 100 खसरा नंबर में सर आइडेंटिफाई? ये तो आपको देखना है लैंड इज कंटिग्यूअस और नॉट कंटिग्यूअस। यहीं पे मैटर खत्म हो जाएगा। इफ लैंड इज नॉट कंटिग्यूअस, उसकी वर्थ ही नहीं है। सर एक बार कम हो जाएगी। देखिए ओनरशिप ओनरशिप और पोजेशन दो अलग अलग चीजें हैं। ओनरशिप उसके पास 1 एकड़ की हो सकती है 500 एकड़ में से, लेकिन पोजेशन जरूरी नहीं 1 एकड़ पर ही हो सकता है वो 1 एकड़ से ज्यादा हो सकता है 1 एकड़ से कम हो सकता है वो 1 एकड़ एक जगह हो सकता है वो 100 जगह हो। हो जगह हो। लीगली ये हमने लीगली वो देखा। 500 एकड़ में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, हर एकड़ में से एक एक परसेंटेज उसकी होगी। तो अगर वो 500 सर एकड़ जगह है तो हर एकड़ में से उसके एक पर्टिकुलर परसेंटेज होगी जितना उसकी ओनरशिप है। तो वो आप ऑफिशियली, जैसा राकेश जी ने बताया, आप आइडेंटिफाई कभी भी नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा, देयर इज नो पॉसिबल सिचुएशन। तो वहां पर पटवारी आप भी नहीं कर सीधा सकता आपको ना। आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, सीएलडी देना पड़ेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा। अदरवाइज सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल, सबसे सेफेस्ट तरीका है हाथ जोड़िए, फीस वापस करिए, नमस्कार सर, फिर मिलेंगे। यस, यही मैं कहना चाह रहा था जो आपने कहा है कि सर नहीं, फीस लो, काम करो, आप लिखो नॉट आइडेंटिफाइड, अज्यूम करो कि यहाँ पे इतना एरिया है, अगर जमीन अगर है, अगर ये अगर आप आगे तो छोड़ दो, लिटिगेशन आप फेस पैसे लो, करने के लिए जमीन लो, हैं, आपने पैसे फेस लेने करने हैं। के काबिल हैं, तो आप राकेश जी की बात मानिए। अगर फेस करने के काबिल नहीं है तो मेरी बात मानिए। यस बस यहीं यस, पर खत्म करते हैं इस मैटर को, ठीक आगे है, बढ़ते हैं। लेट्स कंक्लूड, लेट्स कंक्लूड ये इट। डिपेंड अपॉन योर कैपेबिलिटी एंड स्मार्टनेस। अगर यस आपको यस, लगता है कि मैं फेस कर लूंगा, कल को कोर्ट में होगा कुछ होगा तो पैसा मुझे चाहिए, जो फीस दे रहा है वो मुझे चाहिए, तो ठीक है, राकेश जी की बात मान लीजिए। अगर अगर मेरे जैसे बूढ़े आदमी की मानिए, कल को पता नहीं हमारे जो बचे हैं 2-4 बाल वो भी उड़ जाएंगे। तो मैं भी आप ही की तरह हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो राकेश जी के बाल भगवान की दया से काफी ज्यादा है, ठीक इसलिए वो ठीक रिस्क ले सकते हैं। मैं ठीक और आप ठीक, रिस्क नहीं ले सकते। नहीं तो नहीं, जो नॉट बचे हैं एट दो ऑल। चार वो भी ना उड़ जाए और बाद में कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। यस बेटर है कि सर यस, नमस्ते टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, बेटर बहुत अच्छा, बेटर बेटर सुरक्षित थे वो। बेटर, सर कंक्लूड करते हैं सर। उर्दू वर्ड का भी आपने बताया, फिर से एक बार वीडियो ऐसे डाल दीजिए कि उसका हम प्रिंट आउट निकाल सर सके रिवेन्यू कुछ टर्मिनोलॉजी के ऊपर पूरा वीडियो है, वहां पर सीवी रजिस्टर्ड वैल्यूज क्लब डॉट रजिस्टर्ड वैल्यूज क्लब में जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, और वहां पर आप रिवेन्यू टर्मिनोलॉजी वर्ड लिखिए, पूरा का पूरा वीडियो आ जाएगा, वहां पर सब कुछ आपको मिलेगा। थोड़ा सब्सक्राइब करिए। देखिए ठीक। आज की डेट में आप मुझे बताइए कितने लोगों ने वीडियोस देखे हैं, आपके लिए वीडियोस डाले गए कम से कम 600 से ऊपर वीडियोस हैं। मुकेश वर्मा जी के कमेंट्स भी आए हैं, मैंने देखा है। किसी और ने हिम्मत की है वहां पर देखने की कोशिश की है, एफर्ट्स किए हैं देखने के? नहीं देखने के एफर्ट्स किए। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो बाद में आप मुझे बोलेंगे कि यार ये नहीं भी दे दे, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए। अरे मेरे पास तो पूरा का पूरा वो पड़ा हुआ है, मैं आपको कहां से दूंगा? इलेक्ट्रॉनिकली 25 GB से ज्यादा कोई डाटा जाता नहीं है कहीं भी, तो कितना मैं दूंगा? मुझे क्या पता आपको क्या चाहिए। आपको देखिए खुद आपको जानकार, आप बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, वहां पर लिखा रहा है यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार होगा। यहां पर आपके साइन का भी आप जिम्मेदार हैं।
तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, आपको ही देखना पड़ेगा, आपको ही गाड़ी चलानी है, मैंने नहीं चलानी। ड्राइवर अगर आपके साथ बैठा है तो गाड़ी अगर स्टीयरिंग पर आप है तो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप वहां पर जाके देखिए, वहां पर आपके लिए ही डाले गए, और देखिए और कोशिश करिए वहां पर कमेंट करने की, ताकि जो लोग वो वीडियो बना रहे हैं उनका थोड़ा सा खून बढ़े कि भाई आपके लिए बना रहे हैं, आपने देखा तो अच्छा किया। वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपसे कोई पैसा चवन्नी भी नहीं ले रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं आपके लिए काम, वॉलंटियर्स। अगर आप एक 5 पैसे का काम भी किसी के लिए करते हैं तो 5 बार बताते होंगे। काफी ऐसे लोग हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा सभी ऐसे हैं, लेकिन सभी कुछ ऐसे हो सकते हैं। ये लोग ऐसे सरफिरे लोग हैं जो आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं वीडियो बनाने के लिए, आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए, आपके लिए वॉलंटरी लेवल पे काम करने के लिए, और आपसे कुछ भी डिमांड नहीं करते, कुछ भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन हमारी ड्यूटी तो ये है कि उनको एक थैंक्स लिख दें, वहां पर एक कमेंट लिख दें, कम से कम उनका एक हौसला अफजाई हो जाए, वो और काम कर सके। यही हमारे अंदर कमी है कि हम लोग बेनिफिट सारे लेना चाहते हैं, लेकिन किसी को भी प्रेज नहीं करना चाहते। अरे आप देख रहे हैं, आपके लिए बनाया गया, आप नहीं देखेंगे, पहले तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आप देख ही नहीं रहे हैं। नहीं सर, ये हमारी गलती है, ये मानते हैं हम। आपके लिए चीजें बनाई हैं, आप देख ही नहीं रहे हैं। अब घर में फेसबुक रोटी यूट्यूब पे बने जाना सर। और आप नहीं खाएंगे तो सबसे बड़ी जो बना रहे हैं उनको तकलीफ होगी। और बनाने के बाद अगर आप बोलेंगे भाई रोटी अच्छी नहीं बनी या खराब बनी, तो एक तो उनको बताना तो चाहिए। अगर आप बोलेंगे अच्छी नहीं बनी या खराब बनी है, दैट इज डिफरेंट इशू। लेकिन आप बताएंगे ही नहीं तो कल को आपको रोटी भी नहीं मिलेगी। या आप लिख के रख लीजिए, यह हर घर की कहानी है। सर कहाँ पे यूट्यूब पे कैसे देखना है सर बता दो। बता, समझा दीजिए सर, बूढ़े बंदे हैं, कहाँ समझाती है। जागते रहो, जागते रहो। एक अरे टीवी पर सर, आता है ना रात को। सर आप कंक्लूड कर देखिए दीजिए देखिए, प्लीज। यूट्यूब पर हाँ जाइए, प्लीज। यूट्यूब पर जाइए, मैं अभी लिंक शेयर कर देता हूँ आपके वहां पर उसको सर क्लिक करिए, यूट्यूब का लिंक। वहां पर सर उसको could you सब्सक्राइब का conclude बटन that? दबाइए। ठीक है। जैसे ही वो लिंक खुलेगा वहां पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, अरे दबाया हुआ वैसे सब तो। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब का बटन जब आप क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। अदरवाइज जितने भी वीडियोस हैं आप स्क्रॉल डाउन करिए उस चैनल के ऊपर, सब कुछ शो होने शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक दिखाता हूं, अगर कोशिश करता हूं, अगर शो हो जाए तो। देखिए यहां पर जाइए, अगर नहीं भी आपको आपको इतना भी नहीं लेट इट भी चलता है, तो आप यहां पर जाइए, ये देखिए, ये नहीं देखिए दिखाई नहीं सीवी दे रहा। न्यूज डॉट इन, सीवी न्यूज डॉट इन पर जा सकते हैं आप। ये देखिए ऊपर यहां पर कर्सर में आप सीवी न्यूज डॉट इन लिखिए। ओके, आपकी सीवी न्यूज डॉट इन में जाइए, स्क्रीन सब्सक्राइब, शेयर उसको तो करो, स्क्रीन स्क्रॉल शेयर डाउन नहीं हो करिए, रही है। देव जी स्क्रॉल डाउन अपनी करिए सब। अरे स्क्रीन बात शेयर सुनिए ना, करो। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। 2 मिनट रह गए हैं, बाकी हम लोग बंद करने लगे हैं। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं, सॉरी सॉरी टू से। देखिए अभी शेयर होती है, नजर आता है। यस सर। सर हाँ सर, सीवी न्यूज फेसबुक के डॉट जाकर इन, ना, गूगल फेसबुक में के। जाकर सीवी न्यूज डॉट इन टाइप करिए, ये खुल जाएगी विंडो। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म आ जाएगा, एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म फॉर यू, फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आप चाहें तो लोड मोर करके अगले वीडियो देख सकते हैं, लोड मोर करेंगे और आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको फोन पर खोल रहे हैं या डेस्कटॉप पर खोल रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन यहां पर क्लिक कर दिए, मिस्टर शर्मा, राकेश जी। हाँ जी सर। सब्सक्राइब का बटन यहां पर क्लिक कर दीजिए, बस नहीं, दैट्स ऑल। फेसबुक गूगल पे जाकर CEV आगे, न्यूज न्यूज डॉट इन, CEV न्यूज। डॉट इन। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो देखिए ये आ जाएगा। यहाँ पर टिंडवाल साहब की फोटो देखिए कितनी बढ़िया नजर आ रही है। टिंडवाल साहब, टिंडवाल साहब, आर यू देयर? सर आपकी भी तो है। हाँ जी सर। सर आपकी फोटो नजर आती है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, खुल गया। अब इसको कहाँ जाना है इसके बाद? ये देखिए ये नजर आ गया। यहाँ पर आप, यहाँ पर कहीं सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसको सब्सक्राइब का बटन ऑलरेडी, क्योंकि मेरा क्लिक है मुझे नहीं नजर आ रहा है, आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा। इसको आप देखिए नीचे ऑल वीडियोस को क्लिक कर दीजिए, ये सारा कुछ खुलना शुरू हो जाएगा। वीडियोस पर जाएंगे, वीडियोस को क्लिक करिए, ये आ गया। यहां पर आप कुछ भी टाइप करिए तो ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। अब आप यहां पर रिलेटेड भी IBBI टाइप करते हैं और एंटर कर देते हैं, तो IBBI से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं इसने इसने आपको ठीक करके दे देने हैं। यहां पर देखिए ये सब आपके लिए यहां पर डाले गए हैं। रिपोर्ट राइटिंग है, इंडस्ट्रियल एनालिसिस ऑफ मशीनरी है, ये इश्यूज डेप्रिसिएशन है,
उसके अलावा यहाँ पर एक डिपेनलमेंट का एक बहुत अच्छा वीडियो डाला गया है, डिपेनलमेंट ऑफ वैल्यूअर्स, बैंक के रीजंस ऑफ डिपेनलमेंट, वो डाला गया। काफी चीजें ये सब आपके आपके लिए डाली गई हैं। अगर आप ही नहीं देखेंगे तो फायदा क्या डालने का। और ऑफिशियल वो टाइम उर्दू पर हम वाला लोग डाल आधा दीजिए। घंटा ऊपर हो चुका है ऑफिशियल टाइम से। अगर कोई आपके पास क्वेश्चन है तो इसके बारे में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं स्क्रीन बंद करता हूं। सर वो उर्दू उर्दू वाला डाल दीजिए सर। इसी में है सर, ऑलरेडी इसमें है, रिवेन्यू टर्मिनोलॉजी में। यहाँ पर आप सर्च करेंगे रिवेन्यू टर्मिनोलॉजी, उसके ऊपर पूरा वीडियो आ जाएगा। एक आपको न्यूज भी मिलेगी, cvnews.in में नीचे जाइए, वहां पर आप रिवेन्यू टर्मिनोलॉजी लिखेंगे तो वहां पर आपको वो भी उर्दू के सारे वर्ड्स आपको आ जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक आपको आज ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स क्लब के नाम से व्हाट्सएप के ऊपर चैनल भी है, आप वो चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी भी कोई चार्जेस नहीं, उसमें भी काफी आर्टिकल्स और काफी रिलेटेड मैटर वहां पर शेयर किया जाता है, रेगुलर शेयर किया जाता है। और जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं उसके नीचे आप अपना कमेंट जरूर लिखिए, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या बुरा लगा, क्या अच्छा लगा, जरूर लिखिए, सो दैट के हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है, रिसोर्स पर्सन हैं, उनको एक एक अच्छा लगे कि आपने, उनको पता चले कि आपके रिव्यूज क्या क्या है, क्या क्या उनको चाहिए, क्या क्या मॉडिफाई करना चाहिए, और उनको उससे हौसला मिले। या एनीथिंग एल्स, वी आर ऑलरेडी 40 मिनट्स लेट। कुछ और जानना चाहते हैं? देखिए, बहाना ही है आपसे मिलने का, आपको एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे से मिलने का। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सर आपने कंप्लीट। बोला था फ्यूचर जो कर रहे हैं एक्सपायर्ड आरवीज के लिए, वो सर उसका वो मैं टेंडर। आपसे पर्सनल डिस्कस करूंगा, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। आप मुझे फोन करिए आधे घंटे के बाद, अभी मैं अटेंडेंस करूंगा, आधे घंटे के बाद आप करिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने की। ठीक है। सर ये जब पर्सनल बोलते हैं मैटर्स हम लोग साइड, पर्सनली डिस्कस करेंगे। अगर कोई कॉमन मैटर है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कोई आपका डाउट है किसी सेशन से रिलेटेड या कुछ और, तो वो हम अभी बात कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है। ऑलरेडी हम लोग 40 मिनट लेट हो गए, सभी को जाना है, टाइम ऑलरेडी हो चुका है, लंच टाइम भी हो चुका है। तो हम लोग बाकी के पार्टिसिपेंट्स का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते। कुमरा साहब, आप मुझे फोन करिए आधे घंटे के अंदर, मैं आपका जो भी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है सर। थैंक या एनी अदर डाउट और क्वेश्चन related to subject only? यू सर, थैंक यू। यू। So friends, this is all from our side. Thank you very much for joining this session. Keep learning, stay safe, and thank you very much for following the protocols थैंक as यू जी, fixed by थैंक यू। authority by attending this session. Thank you थैंक यू सर, very much. थैंक यू वेरी Goodbye. मच। Good luck. Keep learning. Stay थैंक यू safe. सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू सो बहुत मच बढ़िया सर। सेशन रहा जी। थैंक यू सर। मैं कोशिश करूंगा इसको वीडियो को शेयर करने का, अगर मुझे परमिशन मिलती है तो मैं शेयर करता हूँ थैंक यू जी, यूट्यूब के थैंक ऊपर। थैंक यू वेरी मच। राइट सर, थैंक यू।